डिस्कस करिवा हला। So consider the following. First question amar hela, consider the following statements about the digestive system. Digestive system विषय से केतटा statement एठी देछि हला। So salivary amylase initiates carbohydrate digestion in the mouth. Statement 1. Hydrochloric acid is in the stomach directly digests protein. Bile emulsifies fats in the small intestine. Our large intestine is the primary site of nutrient absorption. Okay, so which of these statements are correct? प्रथम statement से कहला salivary amylase initiates carbohydrate digestion in the mouth. This is correct. कौन पे mouth रे हमरो को gland थे, salivary gland थे, right? salivary gland थे, salivary gland रे कौन secret हुए ना saliva हला, saliva secret हुए। saliva रे कौन enzyme थे salivary amylase हला। तो saliva रे salivary amylase थे जो हम खाइबा को देखिले हम पाटी रे पानी आसी जाए, that is saliva। तो से salivary amylase कौन करे से initiate करे carbohydrate digestion in the mouth चाहे सेटा limited। then आमे कौन खाइला परे food pipe through रू it enters into the stomach। खाइबा जो आमे खाद्य खाऊ that enters into the food pipe and reaches the stomach। stomach रे हमरो कौन अछि hydrochloric acid अछि हला, किछि भूल नुआ। hydrochloric acid is there in the stomach, but it is a statement लेखा हेछि hydrochloric acid in the stomach directly digest the protein, that is wrong। directly digest करेनी but indirectly you can say हला। काहे कि stomach रे हमरो hydrochloric acid छड़ा भी आउरी गुडा जिंस थाए। कौन थाए पेप्सिन आउ म्यूकस भी थाए stomach रे, पेप्सिन आउ म्यूकस। ये जो पेप्सिन टा थाए ना that is the digestive enzyme जे कि प्रोटीन टा को डाइजेस्ट करिबारे हेल्प करे किए पेप्सिन। आउ से पेप्सिन को एक्टिवेट किए करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट करे हला। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो भी रोल अछि बट सी हमर कोन पेप्सिन को एक्टिवेट कला परे पेप्सिन ही डाइजेस्ट करे डायरेक्टली protein। So this statement is wrong. Directly hydrochloric acid is not involved in digesting the proteins। third hela bile emulsifies fats in the small intestine, that is right। जदि आमे पूरा हमरो elementary canal कथा कहबा माउथ हला, माउथ पर एलिमेंट हमरो फूड पाइप हला, फूड पाइप पर स्टमक हला, स्टमक रो जीवो स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन रो जीवो लार्ज इंटेस्टाइन को हला। तो जेतो बळे स्टमक रो स्मॉल इंटेस्टाइन को जीवो, स्टमक पाखरे आउ दीटा ऑर्गन अछंती कोन माने पैनक्रियास अछि, लिवर अछि। सो पैनक्रियास रो आउ लिवर रो पैनक्रियास रो आउ लिवर रो जो जूस माने बाइल जूस ए सब जूस सीक्रेट हुए सेटा हमरो स्मॉल इंटेस्टाइन रे आसी कि फैट टा को एमल्सिफाई करिबारे हेल्प करे। तो बाइल जूस टा हमरो बाहर लिवर रो, तो सेई बाइल जूस हमरो एमल्सिफाई करे फैट को इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कोन पे जतो बळे हम स्टमक रो सब जिंस जाईथिबो, स्टमक रे जेतो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अछि तो एसिडिक जिंस जीवो ताको न्यूट्रलाइज करिया पे हमको किछ गोटे अल्कालाइन मटेरियल दरकार। तो से अल्कालाइन मटेरियल होची बाइल जे कि से फैट को एमल्सिफाई करिवो। सो स्टेटमेंट 3 इज राइट। Then coming to fourth statement, which is large intestine is the primary site of nutrient absorption. It is wrong। large intestine बदल रे जदि एठी लेखा ही थांता small intestine, then this statement would have been correct हला। जदि small intestine is the primary site of nutrient absorption, that is right। so खाइबा जतो बळे स्टमक रू small intestine को गला, small intestine सेथरो जहा भी भलो खाद्य थिबो ताको एब्जॉर्ब करबो, आउ जो गुडा को दरकार नथिबो जो वेस्ट मटेरियल थिबो से सेटा को लार्ज इंटेस्टाइन को पठे दबो हला। लार्ज इंटेस्टाइन को पठेला परे हमर जेमती वेस्ट मटेरियल हम एक्सक्रीट करो से प्रोसेस तो जानि थिबो। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन।
लार्ज इंटेस्टाइन रे तो हमरो अखाद्य गुडा को बाहरी जाए हैला सो को स्टेटमेंट ठीक है ता माने 1 and 3 is the correct answer only हैला आंसर विल बी डी क्लियर एनी डाउट इन दिस जो माने विथ जॉइन कलो okay next question in human respiration gas occurs in bronchioles alveoli trachea bronchi gas exchange exactly कोठी हुए गैस एक्सचेंज हवा पे गोटे सरफेस एरिया दरकार गोटे स्मूथ सरफेस दरकार जोटा कि हमको मिले एल्वियोली रे हैला एल्वियोली तमे जानथिबो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स माने बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए सेठी ही एक्जेक्टली तमरो गैस एक्सचेंज हुए ओके सो आर आंसर होबो एल्वियोली बाकी ट्राकिया ब्रोंकाई ट्राकिया तो जानिछो एठी थाए रे सेठु पास हुए हमरो एयर टा पास हुए बट एक्चुअली हमरो कोन जो गैस एक्सचेंज रो प्रोसेस टा सेटा हुए हमरो एल्वियोली रे हेलो okay which of the following statements correctly distinguishes arteries from vein artery और vein भितरे कौन difference so artery carry blood towards the heart and veins carry it away artery blood को towards the heart निये माने heart को supply करे blood की artery एठी लिखा है जी और veins कौन करे ताको heart रो दूर को नहीं जाए is it correct एटा टोटली रॉन्ग आर्टरी सब बळे मन रखिबो एमती रे टोटली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हमरो थाए आर्टरीज वेन्स आउ कैपिलरीज हैला तो आर्टरी कौन करे आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट रू ब्लड निये को ब्लड निये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निये ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निये इट कैरीज द deoxygenated blood है तो arteries deoxygenated blood निये away from the heart और veins कौन करे oxygenated blood आने towards the heart है veins carry oxygenated blood towards the heart तो सेमितिया किछि ऑप्शन तमे एठी देखुछो एटा तो रंग हे गेला arteries carry blood towards the heart and veins carry away एटा भूल आर ऑपोजिट हमें कोठी देखिबा सेमती किछि नाही देन वी हैव वाल्व कोथरे थाए आर्टरी रे थाए ना वेन रे थाए आर्टरी रे किछि वाल्व न थाए मन रखो बट वेन्स रे वाल्व थाए तो इठी लिखा है वेन्स लैक्स वाल्व इट इज आल्सो रॉन्ग arteries have valves is wrong artery do not have valves veins have valves हैला तापरे हमरो थर्ड स्टेटमेंट हैला कोन डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किए करी करे मु तुमको कहली आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निये हैला एंड आर्टरीज रो जदी हमें जो एटी आउट स्टेटमेंट तुमरे लिखा है थिक वॉल कहार थाए थिन वॉल्स कहार थाए आर्टरीज रे जेहेतु बहुत प्रेशर रे ब्लड जाए तो ताकू संभालिया पे थिक वॉल्स दरकार वेन्स रे बहुत कम प्रेशर रे ब्लड फ्लो हुए सेति पे थिन वॉल्स दरकार हैला तो वेन्स रे थिनर वॉल थाए आर्टरीज रे थिक मस्कुलर वाल्व थाए वेन्स रे वाल्व्स थाए आउ आर्टरीज रे वाल्व्स न थाए सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ओवर हियर ठीक अछि नेक्स्ट न्यूरॉन्स कम्युनिकेट थ्रू बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स assertion reason से दोची कि chemical neurotransmitters transmit impulses across the synapses so गोटे न्यूरॉन रू आ गोटे न्यूरॉन को यू नो सिग्नल ट्रांसमिट करिबारे किए हेल्प करे सिनाप्स हैला तो ए सिनाप्स गुडा को कोन करे न्यूरॉन्स को दीटा न्यूरॉन्स को कनेक्ट करे और दीटा न्यूरॉन भीतर सिग्नल टा को ट्रांसमिट करबा को हेल्प करे सो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट थ्रू बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल दैट इज राइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी ट्रांसमिट करे हैला सिनाप्स टा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी ट्रांसमिट करे आउ
तुम केमिकल सिग्नल भी ट्रांसमिट करे जदि केमिकल न्यूरो ट्रांसमिटर ताकू माने रीजन देछि केमिकल न्यूरो ट्रांसमिटर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस अक्रॉस सिनेप्स जेतेबेले केमिकल न्यूरो ट्रांसमिटर्स आसी जीवो से माने कोन करिवे impulses ट्रांसमिट करेंगे अक्रॉस द सिनेप्स सो सिनेप्स माने दीटा न्यूरॉन को कनेक्ट करे आउ तमरो सेथरु इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी ट्रांसमिट हुए आउ केमिकल सिग्नल्स भी ट्रांसमिट हुए सो बोथ आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A हैला both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Clear? Next, consider the following pairs of endocrine glands and hormones. Which will be correct? Pituitary, growth hormone, thyroid, thyroxine, pancreas, insulin, adrenal, testosterone. तुमने जानथिबो pituitary gland रे growth hormone थाए, that is correct. Thyroid gland रे thyroxine थाए, it is also correct. Pancreas insulin secrete करे, this is also correct. But adrenal रे adrenaline hormone थाए, adrenaline hormone थाए. आउ जो टेस्टोस्टेरोन टा थाए टेस्टिस ग्लैंड रे हैला सो दिस विल बी रॉन्ग एंड रेस्ट 3 आर करेक्ट सो पिट्यूटरी रे ग्रोथ हार्मोन थाए थायराइड रे थायरोक्सिन पैनक्रियास रे इंसुलिन सिक्रेट हुए सो आउट ऑफ दिस पेयर्स हाउ मेनी पेयर आर करेक्ट ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट हैला चारटा पेयर रो तीनटा पेयर करेक्ट अछि which of the following is a communicable disease हैला hypertension cholera diabetes sickle cell anemia so hypertension माने जो बीपी तमे देखिथिबो communicable disease की गोटे माने जदी तमरो सांग को हेची तो तुमको हबो तुमको डेइबो से रोगोटा सेमते तो नाही बीपी डायबिटीज ए सब डिया रोग नुह हैला तो नॉन कम्युनिकेबल हाइपरटेंशन डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल माने तमर सांग को हेची तम आख पाखर कहा को हेची तुमको हबो सेमती चांसेस न थाए बट यस जेनेटिकली ट्रांसमिट हुए तो जदि तुम पेरेंट्स को बीपी डायबिटीज ये सब अच्छी शुगर से पचारती ना तुम टेस्ट कला वेदर योर एनी ऑफ योर पेरेंट्स हैव डायबिटीज और बीपी जदि से थाए देन तुम जेनेटिकली से ट्रांसमिट हबार चांसेस थाए बट कम्युनिकेबल डिजीज हिसाब से आम कहीपरिबानी है सो हाइपरटेंशन और डायबिटीज तो कम्युनिकेबल नुह बाकी रहा कोलेरा आउ सिकल सेल एनीमिया ए दुटा भितर जदि आम देखा सिकल सेल एनीमिया भी कम्युनिकेबल नुह है सिकल सेल एनीमिया भी कम्युनिकेबल नुह कोलेरा इज कम्युनिकेबल डिजीज बट मन रखिबो डायरेक्टली नुह बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली तमे को लोक को जदि कोलेरा अछि ता सहित हैंडशेक कल कि कौन कल इन दैट केस तमरो कोलेरा डेइबनी तो को केस रे डेइबो जते बेले तमरो कोलेरा फॉर एग्जांपल जो पोखरी गुडा गाँ गुडा देखिबो पोखरी गुडा जो झाड़ा भी बस दियंती सेथिरे गाधांती भी सेथिरे सब करंती से टाइप जदि जणे इन्फेक्टेड पर्सन मान जदि जण को कोलेरा हेची आउ सी जाइए से पानी को कंटामिनेट कर से झाड़ा बसुची कि कौन बसुची तो विद द से पूप तांको पूप रु कौन बाहर कोलेरा जो जहाँ भी सेटा बाहर है दैट इन्फेक्शन इज नाउ इन द वाटर से वाटर सहित जदि तुम कांटेक्ट रे आस जदि तुम से वाटर यूज करो टू प्रिपेयर योर फूड और इफ यू यूज दैट वाटर टू वॉश योर हैंड्स और सेमती देन कंटामिनेटेड वाटर सहित जदि तुम कांटेक्ट रे आसिलो देन तुमको कोलेरा हे पारियो बट डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट थ्रू रु तुमको कोलेरा न हे पारे हैला सो which type of disease is cholera is it a bacterial disease or is it a viral disease it is a bacterial disease it is a bacterial infection which is caused by vibrio cholerae I hope you know this hello को बैक्टीरिया जो कोलेरा हुए वाइब्रो कोलेरे इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोठी हुए खास करके हमरो स्मॉल इंटेस्टाइन रे हुए हैला सो एज आई सेड communicable but indirectly communicable when you come across the contaminated water okay antimicrobial resistance
is a major global threat. Misuse of antibiotics in humans and livestock accelerates drug resistance. So which is correct? Which is correct? Here both are correct. Hello. Antimicrobial resistance is a major global health threat. That is correct. And जदि आमे antibiotic रो misuse करिबा, then से drug resistance humans रे as well as livestock रे drug resistance को से accelerate करिदबा. So both are correct and R is the correct explanation. So इतमे आमे कहूचु antimicrobial resistance is a major health threat because the misuse of this will lead to acceleration in the drug resistance in the humans as well as livestock. Okay. Now with reference to immunity, consider the following statement. Innate immunity is the non-specific and forms the first line of defense. Adaptive immunity develops memory against pathogens. So which is correct? Out statement with H, antibodies are produced by T cells. So out of these three statements, जदि हमें कहबा first दीटा statement is correct. हैला. Innate immunity is a non-specific and forms the first line of defense. Immunity केतेबेले जब हमको vaccination provide करा जाए तो हमें कहू we are immune. तो vaccine रो काम कौन सी से टाइप रो वीक डिजीज माने वीक जर्म्स हो कि वीक वायरस हो आम बॉडी को ट्रांसमिट करे एंड से वायरस को देखिए कि आमर जो आम बॉडीटा पूरा एक्टिवेट हो जाए ताको मारिबा लगी हैला. सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जदि हम कहबा दैट इज इनेट इम्यूनिटी. देन से पैथोजेन जो आमर फॉरेन वायरस और बैक्टेरिया जितेबाला आमर बॉडी देखिबो तो से माने कोन करिवे दे विल बी अडैप्टेड एंड से माने कोन ता अगेंस्ट किसी एक्शन नबा पय ट्राई करिवे. मेमोरी रे स्टोर कर देबा. अच्छा एई टाइप रो डिजीज माने हेई पारे हमको तो नेक्स्ट जेतेबाला एक्चुअली से डिजीज ता हबो देन सेतेबाला से माने रेडी थिबे ताको किल करिया पय का हैला. So adaptive immunity develops memory against the pathogens is also correct. But antibodies are produced by T cells. That is wrong. Antibodies are produced by B cells and not T cells. So जदि इट B cells थांता then एटा ठीक ही थांता. So 1 and 2 only will be the answer. Match the following vaccine types with their examples. So vaccine रो type देछि live attenuated vaccine, inactivated vaccine, subunit or recombinant vaccine and viral vector. Okay. तो को एटा हला तमरा चारिटा वैक्सीन. तो ए वैक्सीन एक को अंडर रे आछि. तो तापे हमको प्रथमे बुझिया को पड़िबो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन माने कोन, इनएक्टिवेटेड माने कोन, सब यूनिट माने कोन आ वायरल वेक्टर माने कोन. जानि छ लाइव एटेन्यूएटेड रे कोन हुए. एटेन्यूएटेड माने वीक हैला. तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रे वीक वायरस और वीक जर्म्स को आम बॉडी भीतर को आमे पठाऊ हैला. पठेला परे कोन हबो जो हमरो बॉडी अछि ता अगेंस्ट रे एक्ट करियो. माने से जानिबो कि एटा गोटे फॉरेन बॉडी आम भीतर को पळे आछि हमको आ अगेंस्ट रे एक्ट करिया को पड़िबो. तो दे विल ट्राई टू अटैक देम. बट जेहेतु एटा लाइव एटेन्यूएटेड माने एटा पूरा डेड वायरस की डेड बैक्टीरिया में पठौनु. लाइव बैक्टीरिया पठौछु जो माने कि वीक हे जानती विथ टाइम से मान को पठाओ. तो से मान को जते बेले पठाओ तो से माने मल्टीप्लाई हबारो चांसेस अछि. तो एटा टिके रिस्की हे जाय लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. बट जदि हम कहबी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन माने हमें ऑलरेडी डेड वायरस की डेड बैक्टीरिया को पठाओ हैला. तो से माने कोन करन ऑलरेडी दे आर डेड बट देखिबा को तांगर फीचर चेंज हुए नी. तो हम बॉडी टे ताको रिकॉग्नाइज करे इट इज अ फॉरेन बॉडी बट देखिबा को सेमिति. तो सेमितिया बॉडी जदि केबे फ्यूचर रे हम बॉडी रे आसी जाए देन ताको माने अटैक करि परिबे. तो आरो मल्टीप्लाई हबारो चांसेस न थाए बिकॉज़ दिस आर डेड. हम इतरे डेड वायरस डेड बैक्टीरिया हमें बॉडी को पठाओ हैला.
सब यूनिट और रिकॉम्बिनेंट कौन सब यूनिट माने बुझ पूरा वायरस के पूरा बैक्टीरिया को न पठेकी ओनली तार गोटे खंडटे आमे बॉडी भीतर पठेबा तो से खंड को पठेकी भी आम बॉडी ताको रिकॉग्नाइज करि परिबो यस इट इज अ फॉरेन बॉडी एंड ताको रोकिबारे हेल्प करि परिबो या फिर ताको मारिबारे हेल्प करि परिबो वायरल वेक्टर कौन वायरल वेक्टर कौन करे ना सी जो ऑलरेडी आरएनए था है आरएनए थाए ता बदल रे से मॉडिफाइड डीएनए यूज करे सो एटा भी कौन वायरल वेक्टर रे भी गोटे शेल थिबो आ एटी तमर आरएनए थिबो तो से आरएनए टा को काट देकी ओरिजिनल वायरस आ ओरिजिनल बैक्टीरिया रो ए आरएनए टा काढी की ए जगह रे से कौन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पठे दबो तो एबे गोटे डीएनए हला आ गोटे शेल भी इठी रुहे हला से सेल रे भी थाए कौन तुम वीकेंड वायरस ही थाए बुझिपाल जो जमती आम कहलु ये एटेनुएटेड रे वीकेंड वायरस ये थाए एंड ये आम आरएनए न पठेकी ता बदल में मॉडिफाइड डीएनए पठाऊ वायरल वेक्टर रे तो दिस आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन आंको छड़ा भी आई थिंक आउ गोटे तुम वैक्सीन अच्छी एमआरए वैक्सीन जो थे ओनली जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस ही पठा जाए सो एग्जांपल हमर इति देछि कोवैक्सीन एमएमआर हेपाटाइटिस बी और कोविशील्ड कोटा को टाइप रो कोवैक्सीन कोविशील्ड एटा हमर कोरोना पे वैक्सीन आस्थिला एमएमआर टा तमरो मोस्टली मीजल्स रुबेला ए मान को पई एमएमआर वैक्सीन हेपाटाइटिस बी तो तमे जानिथबो हेपाटाइटिस बी अगेंस्ट 9 हां 9 टा मु कहूची आथरे कहूची सुन एटा जोटा कहूची तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन माने लाइव देखो वैक्सीन रे कोन हुए से सिमिलर टाइप ऑफ वायरस जर्म्स आम बॉडी को पठाऊ एंड आम माने वैक्सीनेशन रे आम तो डिजीज क्योर करू ना आम प्रिवेंशन पे ट्राई करू तो प्रिवेंट केतेबेले आम करबा जेतेबेले आम जानिथिबा कि एई चोर आम घर को आसीबार संभावना अछि देन से केसेस रे आम अलर्ट रहिबा तो आम बॉडी अलर्ट केतेबेले रहइबो जेतेबेले गोटे फॉरेन ऑब्जेक्ट आम बॉडी को आसीबो तो आगुरु आमे ऑलरेडी से फॉरेन ऑब्जेक्ट आम बॉडी को पठाओ विथ द हेल्प ऑफ वैक्सीन एंड एते हार्मफुल आमे जति पठेबो तो हमर सेठी हार्म हे जीवो तो आमे मॉडिफाइड वायरस मॉडिफाइड जर्म्स को आम बॉडी माने मॉडिफाइड बैक्टीरिया को आम बॉडी भीतर को पठाओ एंड आम बॉडी ताकू देखि कि रिएक्ट करे इट इज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट तो ताकू हमको अलर्ट रहया को पड़िबो एंड ताकू मारिबारे हेल्प करे तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रे कोन हबो लाइव माने बुझ पारे जीवंत जीवंत वायरस किंबा बैक्टीरिया आम बॉडी को आमे पठेबु एंड सेथिरे कोन हबो डेड नुह लाइव बट से माने वीक एटेन्यूएटेड माने वीक वर्जन्स तो लाइव बैक्टीरिया वायरस आम पठेलु जोगुड़ा को विथ टाइम वीक हो जाइछन्ती सेमिति आमे पठेलु तो आम बॉडी सेमान को देखि कि आइडेंटिफाई कला एंड तांको किल करदला हला ट्रैप करके किल करदला सो दैट फ्यूचर रे हमको सेमतिया जदी फॉरेन बॉडी आम बॉडी भीतर को आसी जाए देन आम बॉडी ऑलरेडी मेमोरी रे रखिथिबो एटा गोटे फॉरेन बॉडी आ आपको मते मारिबार अछि हला तो बट चांसेस कोन हे जाए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रे कि से माने जेहेतु वीक थांती बट मरी न थांती सो विथ टाइम से माने मल्टीप्लाई भी हे पारंती क्लियर when we talk about inactivated vaccine inactivated रे हमें डेड वायरस के डेड बैक्टीरिया को पठाओ सो से माने देखिबा को सिमिलर तमे मरि गले भी तमे जेंति देखा जाउछ सेंति देखा जीवो एंड डेड वायरस डेड वैक्सीन डेड बैक्टीरिया को जतबेले बॉडी भीतर पठा जाए तो अगेन आवर बॉडी रिकॉग्नाइजेस इट इज ए यू नो बाहरी जिंस रेटा हमर बॉडी रो जिंस नुओ हला आउटसाइड ऑब्जेक्ट तो ताको मारी बारे से हेल्प करे हला देन कम्स योर सब यूनिट रे पूरा वायरस पूरा बैक्टीरिया जेमते हमें पूरा वायरस टा इठी पठौछु दीटा केस रे हला गोटे जगह रे हमें डेड पठौछु गोटे जगह रे हमें लाइफ पठौछु सब यूनिट रे कोन करबा सब यूनिट रे हमें पार्ट ऑफ द आर किछि गोटे पार्ट गोटे यूनिट हला ई भीतर गोटे यूनिट थिबो से पर्टिकुलर यूनिट टा को ही पठेबा एंड देखिबा हमर बॉडी ताको रिकॉग्नाइज करि परछि कि नै एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट ना बॉडी जेतबेले ताको रिकॉग्नाइज करि दिया एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट ताको किल कर दिए तो दैट इज इटा गोटे काइंड ऑफ हम कहि परिबा सेफ है ना देन वायरल वेक्टर कोन हुए हमरो गोटे शेल जाए आ गोटे डीएनए जाए ए जो डीएनए जाए इट इज अ मॉडिफाइड डीएनए माने आरएनए बदल रे ऑलरेडी आरएनए थाए वायरस रे
है तो से आरएनए को काढ़ी गोटे मॉडिफाइड डीएनए इंसर्ट करा जाए एंड आकु बॉडी भीतर को पठा जाए है तापरे हमरो बॉडी आ अगेंस्ट एक्ट करिवो so that is viral vector clear तो ये चारिटा वैक्सीन भीतर कोटा हमरो को टाइप ऑफ वैक्सीन बुझी पेलो तो एमएमआर जो हमरो मिजल्स रुबेला ए सब पाई मम्स पाई ए वायरस दिया जाए इट इज ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन सो ए विल बी 2 हैला तापरे कोवैक्सीन और कोविशील्ड बुझी पालो दुर्गा चारटा वैक्सीन विषय बुझी पालो तापरे तमरा रहला हाँ एटा हे गला 2 तो ए दीटा ऑप्शन तो एठी ही कैंसिल हे गला एटा जदी 2 आमे जानिलु एटा 2 एठी जानलु तो बीटा ऑब्वियसली एठी आउ किछि ऑप्शन नै बीटा हमरो 1 ही हेथिबो तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कोटा कोवैक्सीन जो हमको पठाइथिला सेथरे कोन डेड वायरस को पठाइथिला डेड कोरोना वायरस को पठाइथिला एंड सेथरे हमर बॉडी एक्ट करथिला ताको किल करिवारो तो दिस इज कोवैक्सीन तापरे रहि गेला हमर सब यूनिट आउ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कोटा आउ वायरल वेक्टर कोटा तो हेपाटाइटिस बी मन रखिबो हेपाटाइटिस बी इज ए सब यूनिट वैक्सीन गोटे यूनिट ही पठा हुए वायरस रो आ तमरो कोविशील्ड ता हे गला गोटे वायरल वेक्टर हैला कोविशील्ड ता वायरल वेक्टर आ गोटे भी तमे मन रखि परिबो जो नोवावैक्स जो हेथिला दैट इज आल्सो ए सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट नोवावैक्स लाइव एटेन्यूटेड रो आ कुछ एग्जांपल तमे मन रखि परिबो जेमति कि चिकन पॉक्स पे जो वैक्सीन दिया जाए इन्फ्लुएंजा पे जोटा दिया जाए हैला चिकन पॉक्स इन्फ्लुएंजा से भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स गुडा को दिया जाए तापरे इनएक्टिव वैक्सीन और इनएक्टिव वैक्सीन रे तमरो मोस्टली जो रेबीज पे जो वैक्सीन दिया जाए कि कोलेरा पे दिया जाए से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दिया जाए हैला एटा तो म कहली नोवावैक्स हेपाटाइटिस बी ए सब यूनिट वैक्सीन्स गुडा को हैला इवन हाँ वायरल वेक्टर रे तमरो कोविशील्ड हैला आउ किछि मते मन पड़नी वायरल वेक्टर रे कोविशील्ड इम्तिया सब जो थरे तमरो शेल भी जाए एंड ता सहित मॉडिफाइड डीएनए भी हमें पठाओ सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सो एटा कोन हे गला हमर A2 हे गला B1 हे गला इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होची कोवैक्सीन आउ सब यूनिट हे गला हेपाटाइटिस बी वायरल वेक्टर हे गला कोविशील्ड हैला सो आंसर विल बी 2 1 3 4 व्हिच इज ऑप्शन बी क्लियर चलो नेक्स्ट consider the following statements regarding CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 eta kono eta mostly it is related to your gene editing सुनिथिबो gene editing रे एटा यूज हुए हैला तो कौन हुए टिके हम पानी पी दिए टिके जीन एडिटिंग रे एठी से कौन करे डिफेक्टिव डीएनए को रिपेयर करे डिफेक्टिव डीएनए को रिपेयर करे किए रिपेयर करे गोटे आरएनए गाइड आरएनए जो लिखा है जी सी गोटे डिफेक्टिव डीएनए को रिपेयर करे CRISPR-9 और Cas9 सो इटा गोटे जीन एडिटिंग रो टेक्नोलॉजी और आम कह पार जीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करा जाए एंड ये लिखाई तो देख जेहेतु ये आम कौच मॉडिफाई करा जाए है तो यहाँ कौन डिफेक्टिव डीएनए को से रिपेयर करमती रिपेयर करेंगे काटिकी रिपेयर कर गोटे जिन को आमको रिपेयर तुम गोटे क्लोथ नेल तुमको अल्टर करार अच्छी
है गोटे ड्रेस बड़ हो जाऊँ छोट हो जाऊँ टाइट हो जाऊँ ढिला हो जाऊँ तो तुमको ताको काटिया को पड़िबो जदि छोट करियार अछि देन काटिया को पड़िबो तो जदि गोटे डिफेक्टिव डीएनए अछि तो ताकू हमको रिपेयर करियार अछि देन आरएनए कोन करिवो ताको काटिबो स्पेसिफाइड पॉइंट्स रे ताको काटिबो एटा मन रखिबो हला सो ए गाइड आरएनए डायरेक्ट्स Cas9 टू टारगेट डीएनए सीक्वेंस एटा हमरो करेक्ट इट एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीजर मु कहली Cas9 कोन करिवो ताको काटिबो तो इट इज आल्सो करेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट को इट हैज एप्लीकेशंस ओनली इन एग्रीकल्चर दैट इज रॉन्ग ओनली इन एग्रीकल्चर तो नुह मोस्टली एटा तमरो जीन एडिटिंग माने जो बायोमेडिकल रिसर्च रे यूज हुए कैंसर को ट्रीट करिया पेन जो थरे कि तुमको डिफेक्टिव डीएनए टा को रिपेयर करिया को पड़े तो एमती बायोमेडिकल रिसर्च एरिया रे एटा यूज हुए आ तुम कौन हाँ कैंसर को मेनली ट्रीट करने आम जीन एडिटिंग जीन थेरापी जीन एडिटिंग ये सब यूज आजकल तो यहाँ मोस्टली कैंसर को ट्रीट करने यूज हुए ओनली इन एग्रीकल्चर इज भूल है बायोमेडिकल रिसर्च रे एटा यूज हुए है सो Cas9 गोटे मॉलिक्यूलर सीजर हिसाब रे काम करे सीजर रे कौन हुए गोटे गाइड आरएनए गोटे टारगेट डीएनए सीक्वेंस टा को रिपेयर करे और यू कैन से गोटे डिफेक्टिव डीएनए टा को रिपेयर करिवारे हेल्प करे आरएनए आउ सेटा हैज एप्लीकेशन इन बायोमेडिकल रिसर्च मेनली कैंसर को ट्रीट करिया पे हमें सेटा यूज करू हैला बट एमती नुह कि एग्रीकल्चर पे यूज हुए नहीं एग्रीकल्चर रे भी यूज हुए आजिकली जीन एडिटिंग जीन मॉडिफाइड क्रॉप्स गुड़ा तुम देखुव बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल ये सब आछी तो दैट मीन्स जीन एडिटिंग सेठी भी यूज होची सो इट इज नॉट लिमिटेड टू एग्रीकल्चर मोस्टली बायोमेडिकल रिसर्च रे यूज हुए थेरापेटिक्स रे यूज हुए हला ड्रग्स रे यूज हुए ट्रीटमेंट रे यूज हुए बट इट इज आल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर बीटी क्रॉप्स जो मॉडिफाइड क्रॉप्स गुड़ा आम करूँ सो ओनली इन एग्रीकल्चर लिखाई से भूल एग्रीकल्चर सहित जदि बायोमेडिकल रिसर्च लिखाई था है डायग्नोस्टिक्स थेरापेटिक्स लिखाई था देन से केसेस रे एटा ठीक ही था तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग 1 and 2 only will be the right answer है next consider the following statements about CAR T cell therapy तो एटा भी मोस्टली हमरो कैंसर ट्रीटमेंट पाई यूज करा जाए है ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेशेंट टी सेल जेहेतु कार टी सेल थेरेपी तो टी सेल से तो ही डील करिवो तो सेमिति देखिकी भी हम एटा को टिक करी दे परिबा है ना तो इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेशेंट रो टी सेल टा को मॉडिफाई करिवो इट इज इंडियास फर्स्ट इंडिजिनस CAR T cell therapy next CAR 19 is India's first indigenous CAR T cell therapy এটা भी ठीक किंतु it is primarily used in cardiovascular diseases that is wrong it is mainly used to treat cancer and not cardiovascular diseases हैला मोस्टली आज जदि हमें देखिबा ब्लड कैंसर पई हमें ए थेरेपी यूज करू CAR T सेल थेरेपी टी सेल गुड़ा को मॉडिफाई करा जाए एथरे सो 1 and 2 only will be the correct answer हैला चलो मैच द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी टूल्स विथ देयर एप्लीकेशन तो ये तुम जानी थी ऑलरेडी डीएनए टेस्ट गुड़ा को आम देखु क्राइम पेट्रोल रे देखिबो डीएनए टेस्ट करो डीएनए टेस्ट कले हमको आमे क्रिमिनल विथ देयर हेल्प ऑफ देयर फिंगरप्रिंट और तंगर बॉडी रो जो चुटी रक्त ये सब ये करके आमे डीएनए टेस्ट करके आमे क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर परिबा जो कहले मॉडिफाइड क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जेमती बीटी कॉटन हे गला सेटा कोन पई कोथरे यूज हो कोथरे अप्लाई करा जाय परिबो पेस्ट रेजिस्टेंस पई ना माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज पई ना स्टेम सेल पई तो ऑब्वियसली क्रॉप्स माने एटी पेस्ट अछि पेस्ट रेजिस्टिंग पे हेल्प करिवो जदि भी तुम डाउट लागुछ तुम बाकी ऑप्शंस गुड़ा को आगे पढ़ी दबो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट और ये अछि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को प्रिवेंट करिबारे हेल्प करिछि सो ऑब्वियसली एटा को हमें लिंक करि परिबा तो एटा ठीक हबो माइटोकॉन्ड्रियल डील्स विथ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज रो प्रिवेंशन थेराप्यूटिक क्लोनिंग अछि और स्टेम सेल अछि सो थेराप्यूटिक क्लोनिंग हमरो हार्वेस्ट
stem cell, this is right. तो गोटे एठी तमे जदि देखिबो which of the choose the correct option. DNA identify criminal ठीक अछि, तो A1 ठीक अछि, C3 ठीक अछि, D4 ठीक अछि, तो बाकी रहिला B. B will be automatically 2, तो 1 2 3 4 कोडी अछि, option B will be the correct answer. Next, so eta question cover up kariyar achi la. So with reference to the greenhouse effect, consider the following statement. It is caused only by carbon dioxide. Greenhouse effect is caused only by carbon dioxide. eta thik ki eta to bhul. It is nitrogen oxide achi, mane out both good greenhouse gases achi, right? It is not only confined to carbon dioxide. Carbon dioxide is not the only greenhouse gases. आ छोड़ा हमरो methane अच्छी, nitrogen oxide अच्छी, इमते बहुत गुड़ा हमरो greenhouse gases अच्छी, जो थी पाई हमरो greenhouse effect देखा जाए. So इटा तो भूल है गला. इटा जो दी भूल है गला, automatically ए तीनटा भूल है गला. So even if you don't read statement 2 and 3 also, that is fine, because हमें it is only caused by carbon dioxide तो भूल, तो इथे हमें elimination option use करके ए तीनटा हमरो इथे कटि गला हैला. बाकी रहिला 2 and 3. Greenhouse effect is necessary for maintaining life supporting temperature on earth. Yes, जो normal temperature maintain करिया पे किछिटा greenhouse effect हमको दरकार, but human activity जोगु आमे एई इफेक्ट को अधिक इंप्रूव कर दउछु, जोथि पई कि हमर ग्लोबल वार्मिंग देखिया को पाउछु. यस, अत्यधिक जतबे हमर ग्रीन हाउस गैसेस आमे एमिट करूछु बिकॉज ऑफ आवर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, आम एक्टिविटीज जोगु एते सारा जो ग्रीन हाउस गैसेस बाहरुची सेइथि पई हमर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ुची. तो दिस इज आल्सो करेक्ट. सो 2 and 3 आर करेक्ट. एमितरे भी हमें ओनली स्टेटमेंट 1 रो ही आंसर पाई जाउछु. बुझलो. Which of the following international treaties is specifically related to the protection of ozone layer? Ozone layer रो protection सहित को protocol तमरो एठी डील करे? कौन होबा आंसर? Montreal protocol हैला. Montreal protocol तमरो ozone protection पई करा जायथिला. Can you tell me Kyoto protocol, Paris agreement और Nagoya protocol को थि पे करा जायथिला? दुर्गा. क्योटो प्रोटोकॉल आउ पेरिस एग्रीमेंट कौन पे करा जायतिला? क्लाइमेट चेंज पे. ए दीटा जाक तमरो क्लाइमेट चेंज पे करा जायतिला हैला. नागोया प्रोटोकॉल तमरो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में करा जायतिला हैला. नागोया प्रोटोकॉल बायोडायवर्सिटी पे करा जायतिला. नाउ कैन यू टेल मी व्हिच ईयर को ईयर रे ए सब हेतिला? क्योटो प्रोटोकॉल को ईयर रहिथिला, पेरिस एग्रीमेंट केबे हेतिला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केबे हेतिला, नागोया प्रोटोकॉल केबे हेतिला. ए ईयर गुडा को भी मन रखिया को पड़े बिकॉज़ से गुडा का आसी जाय क्वेश्चन रे हैला. तो एटा हेतिला तमरो 1992 रे, एटा हेतिला 2015 रे. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केबे हेतिला? 1989 रे हैला. आ नागोया प्रोटोकॉल हेतिला 2010 रे. ईयर गुडा को भी हमको मन रखिया पड़ियो. एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर एमती भी पचारि पारंती हैला. सो क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पे थिला. क्योटो प्रोटोकॉल 1992 रे हेतिला. क्योटो जापान रे हेतिला, सेति पे नाटा क्योटो प्रोटोकॉल. पेरिस एग्रीमेंट पेरिस रे हेतिला 2015 रे हेतिला. दैट वाज आल्सो फॉर क्लाइमेट चेंज. एंड सबटू रिसेंट जदि हमें देखिबा ए भितरो पेरिस एग्रीमेंट. तापरे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होची सबटू ओल्डेस्ट, 1989 रे हेतिला, मेनली फॉर द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन. आउ 2010 रे तमरा हेतिला नागोया, दैट इज आल्सो इन जापान. नागोया रे हेतिला 2010 रे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पे सेटा हेतिला हैला. नेक्स्ट, acid rain damages aquatic ecosystems and soil fertility,
and it is reason se dechi, it is primarily caused by the deposition of carbon dioxide dissolved in water. Statement 1 is correct कि acid rain हमरो damage कर दिए, aquatic ecosystem को damage करे and soil fertility को damage करे, that is correct. But को gases involved था acid rain रे, is carbon dioxide involved? Carbon dioxide is not involved. ହେଲା तो जदि आमे आरो देखिबा आरो इक्वेशन माने केमिति एसिड रेन फॉर्म हुए तो एदर तमरो सल्फर डाइऑक्साइड इन्वॉल्व थिबो ହେଲା सल्फर डाइऑक्साइड सहित तमरो ऑक्सीजन आउ वाटर सहित कंबाइन हे गले तमरो एटा हे जे H2SO4 ହେଲା एटा हला सल्फर डाइऑक्साइड इन्वॉल्व थाए एंड सल्फ्यूरिक एसिड तमरो फॉर्म हुए नाइट्रिक एसिड रेन रे आउ गोटे कोट लिखिबी हां आउ गोटे तमरो कोन थाए गोटे हला सल्फर डाइऑक्साइड आउ गोटे थाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस अगेन O2 प्लस वाटर सहित एटा हे जाय नाइट्रिक एसिड हला 4 ना एटा 4 अछि तो एठी 4 एज नाइट्रिक एसिड तो दिस आर द इक्वेशंस फॉर एसिड रेन तो एटी कोन सल्फ्यूरिक एसिड बाहरुची आउ नाइट्रिक एसिड बाहरुची एंड दिस इज कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड and nitrogen dioxide. So in anywhere do you see carbon dioxide is involved in it? Carbon dioxide is not involved in this. So एटा तो totally भूल ही जाओ तो only statement 1 is correct. A is correct but R is incorrect. है ना चलो which of the following types of polymers match the following types of polymers with the current examples हला तो ये types of polymer जदि हमें देखिबा thermoplastic देछि thermosetting देछि elastomer देछि और semi synthetic देछि elastic और plastic भितर डिफरेंस बुझिछो elastic माने रबर बैंड हमर elastic थाए तो दैट मींस जदि हमें ताकू झिकिबा एंड ताकू छाडी दबा देन सी तार ओरिजिनल पोजीशन को आसी परिबो बट गोटे प्लास्टिक जिंस फॉर एग्जांपल तमर प्लास्टिक बाल्टी तमे ताकू जदि हमें स्ट्रेच करबा एंड देन ताकू छाड दबा देन से कोन तार ओरिजिनल पोजीशन को आसीबो कि आसीबोनी ताको जदि हमें झिकिबा से ऑटोमेटिक से भांगी ही जिवो हला किछिटा प्रेशर जदि पडिला से भांगी जिवो सो कोन हुए इलास्टिक रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बट प्लास्टिक तार ओरिजिनल पोजीशन को रिटर्न हुएनी हला आफ्टर डिफॉर्मेशन सो एटा हला डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक एठी तमर लिखा हिची थर्मोप्लास्टिक आ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एटा एक्चुअली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हला तो डिफरेंस कोन थर्मोप्लास्टिक रे कोन हुए आ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रे कोन हुए थर्मोप्लास्टिक रे थर्मोप्लास्टिक रे कोन हबो कि बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट थाए जो गुडा को थर्मोप्लास्टिक थांती से मानकर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम थाए हला आ थर्मोसेटिंग रे तांगर मेल्टिंग पॉइंट हाई थाए टिके रहलो हेलो ये पेन टा ना काम करनी माने टिके लैग होची
लिखला बेले बहुत समय लेखा विश्वकर्मा पूजा टिके वेट कर सुनीता दुर्गा टिके वेट कर कितने 15 था 60 असुविधा ठीक अच्छे है so we'll sorry for the disturbance to match the following type of polymers with their correct examples okay so मु कहली तुमको इलास्टिक और प्लास्टिक भीतर डिफरेंस कौन इलास्टिक माने तार ओरिजिनल पोजीशन को आसी जिवो प्लास्टिक तार ओरिजिनल पोजीशन को आसी परिबनी आफ्टर द डिफॉर्मेशन सो थर्मोप्लास्टिक कौन थर्मो माने हीट माने आमे किछि उठे हीट प्रोवाइड करू प्लास्टिक को बट इथे आमे एत में जानी थर्मोप्लास्टिक रो लो मेल्टिंग पॉइंट थाए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रो हाई मेल्टिंग पॉइंट थाए हैला तो थर्मोप्लास्टिक रे कौन हुए क्लियर देखा होची तो सुबुची सबु सो थर्मोप्लास्टिक रे कौन हुए लो मेल्टिंग पॉइंट थाए तो ताकू आमे फर्दर आउ मॉडिफाई माने रीमोल्ड करि परिबा
है ए प्लास्टिक गुड़ा को थर्मोप्लास्टिक को आम लो टेम्परेचर रे तो आउ थे आम रिमोडिफाई रिमोल्ड कर बट थर्मोस्टैटिक जेहेतु मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई थाए तो ऑलरेडी से माने मॉडिफाई हो जाती तो ताकू आउ थे मैंने गोटे थर हिट देला आउ थे हिट देकी मॉडिफाई करवाटा संभव नुह सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर पूरा जदि आम देखा थर्मोसेटिंग लिमिट ठीक रही इट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो ऑलरेडी सेट हो जाती आउ सेट करा जाय परिबो नहीं थर्मोसेटिंग रे इलास्टोमर माने बुझुथबो इलास्टिक जिंस इलास्टिक पॉलीमर जोटा इलास्टोमर आमे ताको कहि परिबा तापरे सेमी सिंथेटिक नाउ ए क्वेश्चन टा टिके गोलमालिया अछि मु जतबेला आज देखिली मोस्टली कहीं आम देखिए कौन पे मत गोलमालिया लगे बिकॉज एक तो ऑप्शन ठीक नहीं थर्मोप्लास्टिक बेकलाइट हम ना मेलामाइन हम ना वल्कनाइज्ड रबर हम ना रेयन हम कोटा हम कहल थर्मोप्लास्टिक जनरली तमर रेयन थाए रेयन नाइलॉन एगुड़ा को प्राय माने तमर नाइलॉन मोस्टली थर्मोप्लास्टिक थाए रेयन नाइलॉन ये सब थर्मोप्लास्टिक सेमी सिंथेटिक बी कहि परिबा बट मोस्ट एप्रोप्रिएट होची थर्मोप्लास्टिक तापर बेकलाइट मेलामाइन वल्कनाइज्ड रबर ए सब आसी जीवो एक्चुअली थर्मोसेटिंग रे हला तो एटा टिके गोलमालिया अछि क्वेश्चन टा जदि वल्कनाइज्ड रबर जगह रे नेचुरल रबर थांता देन मु ताको इलास्टोमर बोली कहि पारि थांती नेचुरल रबर थांता देन दैट वुड हैव बीन इलास्टिक बट वल्कनाइज्ड रबर अच्छी तो सेटा इलास्टिक माने इलास्टोमर हिसाब रे हमें नहीं परिबानी वल्कनाइज्ड रबर भी हमर थर्मोसेटिंग अंडर ही आसी जिवो सो B3 आसे बट B3 एठी कोठी ऑप्शन नाही कि D4 भी एठी ऑप्शन नाही तो एटा टिके डाउटफुल क्वेश्चन बट जदि तमे पचारिबो कोटा कहार हबो तो माने किछु तो हमको करिया को पड़िबो देन से केसेस रे हमें D4 एठी करबा सॉरी इफ थर्मोप्लास्टिक होची हमर नाइलॉन हला सेमी सिंथेटिक हमें रेयन को कहि परिबा बट D4 एठी कोठी ऑप्शन नाही D एदर 1 अछि 2 अछि 3 अछि हला तो इन दैट केस जदि हमें D1 करूछु माने हां सॉरी बेटा बहुत कर A4 सॉरी A4 अछि बट ए D4 एठी कोठी नाही सेटा हला असुविधा इलास्टोमर C3 ए गोटे ही अछि बट वल्कनाइज्ड रबर भी इलास्टोमर नो नेचुरल रबर थिले सेटा इलास्टोमर हे थांता हला तो सेटा टिके कंफ्यूजन हे जाउची तो ये टिके आउथरे मे भी केतोल देखिबा थर्मोसेटिंग बेकलाइट भी थर्मोसेटिंग मेलामाइन भी जदि हमें देखिबा मेलामाइन भी हम थर्मोसेटिंग रे ही रखि परिबा तो एटा टिके कंफ्यूजन अछि बट एति की मन रख तमे जो टाइप्स ऑफ पॉलीमर रे थर्मोप्लास्टिक रो मेल्टिंग पॉइंट लो थाए तो ताको हमें मॉडिफाई करि परिबा हैला किछि हीट देला परे बट थर्मोसेटिंग को ऑलरेडी से सेट हो जाए तो ताको हमें मॉडिफाई करि परिबानी इलास्टोमर माने हमरो नेचुरल रबर टा होची इलास्टोमर इलास्टिक पॉलीमर एगुडा को हैला आ सेमी सिंथेटिक माने तुम कहि परिबो रेयन इज करेक्ट फॉर सेमी सिंथेटिक हैला अच्छा जो हमरो एक्रिलिक टेफ्लॉन एगुडा को कोन था एगुडा को भी थर्मोप्लास्टिक ही थाए आ नेचुरल पॉलीमर हमरो कोन कहलो सुनीता एंड दुर्गा नेचुरल पॉलीमर कोटा हमरो नेचुरल पॉलीमर कोटा कोटा नेचुरल पॉलीमर का कहबा
कॉटन है कॉटन हूँ आमर नेचुरल पॉलीमर मन रखिए एटा है आर आंसर मु भी माने सेमती जेहेतु कोटा मिसुची कोटा मिसुनी तो इन दैट केस हमको आंसर की रे बदे एटा प्रोवाइड करा है आंसर बी कंसीडर करि परिबो एटा देखिकी कि तुम जदि आम इलास्टोमर को वल्कनाइज्ड रबर कहि परिबा थर्मोप्लास्टिक को रेयन कहि हबो हैला बिकॉज नाइलॉन टा हमरो नाइलॉन भी हमरो थर्मोप्लास्टिक अंडर रे पळे आसे बट सेमी सिंथेटिक रे बैकलाइट आसीबाटा मते ठीक लागुनी सेमी सिंथेटिक रे बैकलाइट आसीबोनी थर्मोसेटिंग रे बैकलाइट आसी परिबो मेलामाइन भी थर्मोस्टैटिक हे परिबो जोटा कि ऑलरेडी इटी देइची मेलामाइन थर्मोस्टैटिक बट एई ऑप्शन टा खास करके भूल हे जाइची सेमी सिंथेटिक रे हम बैकलाइट को रखि परिबा नाही दैट इज द ओनली प्रॉब्लम हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वल्कनाइजेशन माने कोन मु तुमको कहली इलास्टिक रबर हमरो इलास्टोमर हिसाब रे हम नै परिबा इलास्टिक रबर टा इलास्टोमर हिसाब रे नहीं परिबा तो इलास्टिक रबर को किछटा गुटे हमको कले से हमर वल्कनाइज्ड रबर ही जिवो नेचुरल रबर को हमें केमिति वल्कनाइज करि परिबा नेचुरल रबर को सल्फर सहित मिसेले सेटा हे जाय वल्कनाइज्ड रबर हैला नेचुरल रबर को सल्फर सहित मिसेले सेटा से प्रोसेस को कहा जाए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर और वल्कनाइज्ड रबर आमे ताकू कहबा कोन पई करा जाए मेनली तारो टेंसाइल स्ट्रेंथ ताको इंक्रीज करिया पई टेंसाइल स्ट्रेंथ नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ माने कोन बुझछो सब बेले मन रखिबो दी प्रकार फोर्स थाए हैना एठी देखो दी प्रकार फोर्स थाए गोटे एठी बॉडी अछि ए फोर्स को दी आडू जते बळे ताको चापिबा हमें सेटा हमर कोन हे जो ता माने हमें ताको कोन करछु कंप्रेस करूछु हैला जेतोला हमें ताको प्रेस करूछु इन बोथ साइड की चारि पटरु जेतोला फोर्स करूछु दैट इज बेसिकली ए कंप्रेसिव फोर्स हैला हमें कंप्रेस करूछु तो एटा हे गेला हमर कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स कोटा जेतोला हमें ताको झिकिबा इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैला जेतोला हम ताको ऑपोजिट डायरेक्शन रे झिकिबा आकु हमें कहू टेंसाइल फोर्स हैला तो वल्कनाइजेशन हमें कोन पे करू तारो स्ट्रेंथ बढ़ावा को स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ माने जेते हमें ताको झिकिबा से छिड़ीबनी सेही स्ट्रेंथ ताको हमको बढ़ेबार अछि जार टेंसाइल स्ट्रेंथ कम थिबो ताको टिके झिकिला माने से सेठी ब्रेक हे जिवो बट जार टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक थिबो हम ताको जेते एक्सपांड करबा एठी तुम देखि परतो जदि यारो टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक थिबो ई मटेरियल रो देन से अधिक हम ताको झिकी परिबा तो एई जिंसटा केते बेला हे परबो जतोला हम नेचुरल रबर को सल्फर सहित मिसेबा we can get vulcanized rubber and why we do that process to increase the tensile strength हला सो एठी हम जदि कहबा एटा हबो हमरो ठीक ऑप्शन हैला हमें तारो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करछु टेंसाइल स्ट्रेंथ माने हमें बहुत झिकी परिबा दैट मींस हमें तारो इलास्टिसिटी को भी इंप्रूव करछु सो इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ेबा पई हमें वल्कनाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट करू ए सब किछि भी एठी माने वल्कनाइजेशन सहित रिलेट ही करेनी तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस रे सल्फर ऐड करा जे सेटा मन रखिबो हैला सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर which of the following is true about the small modular reactors small modular reactor विषय रे को statements गुडा को इठी ठीक they have a power capacity of 1/3 of conventional reactor which is correct हैला large reactor conventional reactors माने बहुत large reactor तांकर 1/3 power capacity एमानकर थाए small reactors मानकर this is correct their design emphasizes passive safety features this is also correct but they cannot be integrated with renewable energy system cannot be एटा भूल they can be integrated जेतु से माने small ताको हम आउरी भलो से इंटीग्रेट करि परिबा हैला रिन्यूएबल क्षेत्र रे और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम रे हम ताको आउट टिके भल से इंटीग्रेट करि परिबा बिकॉज़ दे आर स्मॉल सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हैला दैट डिजाइन एम्फसाइज पासिव सेफ्टी फीचर माने एक्टिव सेफ्टी फीचर्स न थे कि पासिव सेफ्टी फीचर्स था दैट इज करेक्ट सो 1 and 2 only will be the correct answer
Next, in the context of nuclear technology, a fast breeder reactor कौन करे? It uses thermal neutrons and water as coolants, or it produces more fissile material than it consumes. Answer will be this. है जो आमर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थाए से माने अधिक फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस करंती जेति कि से माने कंज्यूम करंती ताठू अधिक फिसाइल मटेरियल से माने प्रोड्यूस करंती. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रो डेफिनेशन ये सेया कि दे प्रोड्यूस मोर फिसाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम and they only use thorium as wool. They also use uranium भी use करंती, thorium भी use करंती तांकर fuel हिसाब रे. So this statement is wrong. It has no role in India's 3-stage nuclear program. Obviously it a भूल है ना. It has role and it uses thermal neutrons and water as coolant. It a भी भूल. So it हला ठीक, produces more fissile material. एंड कूलेंट हिसाब रे से माने कौन यूज करंती? वाटर नो यूज करिकी सोडियम यूज करंती हैला. ठीक है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम विद देयर की फीचर्स. स्टेज 1 यूटिलाइजेशन ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम. स्टेज 2 यूज ऑफ pressurized heavy water reactors with natural uranium. Stage 3 fast breeder reactors using Pu-239. What will be the correct answer? First stage रे pressurized heavy water reactor use होबो natural uranium सहित हैला. तापरे तमर होबो fast breeder reactor use होबो Pu-239 and stage 3 is utilization of uranium 233 and thorium 232 हैला. So first हैला तमरो PHWR pressurized heavy water reactor stage 1 रे यूज हुए. stage 2 रे तमरो Pu-239 यूज हुए. stage 3 रे then you come uranium 233 and thorium 232 यूज हुए हैला. so एटा कोन हे गेला ता माने A2 B3 and C1. A will be the correct answer. With reference to the dual nature of light, consider the following. Dual nature of light माने हमें कौन बुझुचु? Its wave nature explains the interference and diffraction. Is it correct? Is it correct? It is correct. हैला. dual nature हमें कहूचु तामरे से interference भी एक्सप्लेन करि परिबो एंड से डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करि परिबो तार वेव थ्योरी. एंड इट्स पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन्स द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट इज आल्सो करेक्ट, बट both the natures can be simultaneously observed in the same experiment. That is not correct. That is not correct. So 1 and 2 is the correct answer. जल्दी जल्दी जीवा को पड़े हमको 100टा क्वेश्चन अच्छी. अच्छा, a convex lens is used in cameras and magnifying glasses. A convex lens always diverges parallel rays of light. एटा तो देखु देखु जाने कहबो. convex lens magnifying glasses रे यूज होची, कैमरा रे यूज होची. that is correct हैला. किंतु convex lens always diverges. एटा भूल. it converges हैला. convex lens converges parallel rays of light. so एटा भूल गेला, एटा ठीक हे गेला. so state assertion A is right and R is incorrect. so option C will be the correct answer. अच्छा, ये चारटे जिनस तुमको देइछि, चारटा फेनोमेनन: डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. ना डायरेक्टली तुम जो देखिबो पोलराइजेशन वर्ड एठी अछि, एठी पोलराइज्ड सनग्लासेस अछि. तो डायरेक्टली हम ताको लिंक कर परिबो. D1 ऑटोमेटिकली हे गेला. पोलराइजेशन फेनोमेनन यूज वे पोलराइज्ड सनग्लासेस बनेबारे.
और पोलराइज सनग्लासेस रे. सो D1 हला माने यू आर ओनली लेफ्ट विथ वन ऑप्शन, बाकी तीनटा D1 कोठी भी नहीं हला. सो एमिति फर्स्ट आमे ऑप्शन एलिमिनेट करिवा सिखियार अछि हला. तो D1 जान देलो माने ऑटोमेटिकली बाकी तीनटा हेतिबो. आ त तमे चेक भी कर परबो D1 जदी होची A2 हेतिबो. डिस्पर्शन रेनबो फॉर्मेशन हला कोठी ए फेनोमेनन टा यूज हुए. डिस्पर्शन फेनोमेनन इज अप्लाइड इन रेनबो फॉर्मेशन, दैट इज राइट हला. तो A2 हे गला. इंटरफेरेंस हमें कोठी यूज करू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे इंटरफेरेंस फेनोमेनन यूज हुए. दिस इज आल्सो करेक्ट हला. डिफ्रैक्शन यूज हुए बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टेकल्स, दैट इज आल्सो करेक्ट. सो गोटे भी जति हमें जान लो पोलराइजेशन पोलराइज सनग्लासेस मैच कर देलो देन ऑटोमेटिकली तमरा एटा ठीक हे गला हला. नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किए डिस्कवर करथिला करिथिले माइकल फैराडे करथिले. इट इज राइट. इट इज a current induced in a conductor when it is placed in the changed magnetic field, that is also correct. but third statement जदि हमें देखिबा फ्लेमिंग रो लेफ्ट हैंड रूल यूज हेछि नाही. फ्लेमिंग रो राइट हैंड रूल यूज हेछि टू डिटरमाइन द direction of induced current हैला. खाली मैग्नेटिक फील्ड रे जदि थांता देन हमें लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई हेछि कहि थांतो. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे सब बेले मन रखिबो राइट हैंड रूल अप्लाई हुए आ लेफ्ट हैंड ता तमरो अप्लाई हुए कोठी खाली लेफ्ट हैंड. क्वेश्चन रो आंसर ऑप्शन रे नहीं. 16 क्वेश्चन रो आंसर हाँ सेटा तो हमें डिस्कशन कलु ना सेते बेले सेटा टिके गड़बड़ हेछि. 16 रो मो पूरा डिटेल डिस्कशन करली. जदि D1 ही थांता कोठी थांता देन ठीक ही थांता. बट D1 कोठी भी नहीं हला. अच्छा खाली मैग्नेटिक फील्ड जदि दे थांता देन से केसेस रे फ्लेमिंग रो लेफ्ट हैंड रूल अछि. नहीं सुनीता D1 अछि की D1 नहीं ना 16 रे अच्छी की. अच्छा सॉरी D4 नहीं मुझे सेमी सिंथेटिक रेयन हबा कथा बट सेटा नहीं. बाकी तमे कहि परिबो A4 कहि परिबो. इट इज करेक्ट. थर्मोप्लास्टिक जदि नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक हे परछि तो रेयन भी थर्मोप्लास्टिक हे परिबो. बट D4 नहीं सेटा असुविधा हे जाउछि. आ बेकलाइट मेलामाइन ए सब थर्मोसेटिंग अंडर आसे एंड वल्कनाइज्ड रबर तमरो इलास्टोमर हिसाब रे आसे हला. तो एटा ठीक अछि. सॉरी नेचुरल रबर तमरो इलास्टोमर अंडर आसीबो बट वल्कनाइज्ड रबर थर्मोसेटिंग हे जेबो हला. सेटा असुविधा अछि. स्टेटमेंट ये ऑप्शन बी भी 100% ठीक नुह. टिके एटा गड़बड़ अछि. तीनटा जदि हमें देखिबा तीनटा जाको हमें कहि परिबा थर्मोसेटिंग अंडर रे आछि. सेटा हला असुविधा हला. देखिए मे भी क्लास रे हमें केते बळे पढिबा पॉलीमर विषय रे सेते बळे देखि. तो एटा कोन हे गेला 24 रो आंसर लेफ्ट हैंड रूल न यूज है कि जो राइट हैंड थांता एटा ठीक ही थांता. सो ऑप्शन 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो एटा सब बेले आ पई मन रखिबो तमे गोटे जिंस टिके रो ए डायग्राम टा प्राय मन रखिबो हला. एटा हला तमरो वेवलेंथ
एटा हला फ्रीक्वेंसी एटा हला एनर्जी हला तापरे गामा रे एक्सरे तापरे यार हला सो एटी कोन हेची कि जदी तमरो वेवलेंथ कमुची फ्रीक्वेंसी बढ़ुची आउ एनर्जी भी बढ़ुची हला सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कॉस्मिक रेज रो वेवलेंथ सबुठी सब बेले अधिका थाए हाई वेवलेंथ आउ रेडियो वेव रे सब बेले लो वेवलेंथ थाए वेवलेंथ माने कोन बुझुचो तो दीटा क्रेस्ट भीतर डिस्टेंस को आमे कहू वेवलेंथ हला फ्रीक्वेंसी का को कहबा गोटे सेकंड रे केतेटा वेव पास करे गोटे पॉइंट रे सेटा हला फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कोन नंबर ऑफ waves passing through a point in 1 second that is the frequency तो जेते अधिका वेवलेंथ सेते कम फ्रीक्वेंसी बुझ पाछो अधिका वेवलेंथ जदी हे गला डिस्टेंस बढ़ी गला तो फ्रीक्वेंसी टे कमी जीवो एंड फ्रीक्वेंसी टे जतो बेले कमी जाउची देन तमरो एनर्जी भी सेठी कमी जाउची सो सबटु बेसी एनर्जी कोठी थाए कॉस्मिक रेस रे सबटु बेसी सबटु कम एनर्जी कोठी थाए रेडियो वेव रे सबटु कम वेवलेंथ कार थाए कॉस्मिक रेस रो सबटु अधिका वेवलेंथ ए सॉरी टिके उल्टा लिख देली हाई वेवलेंथ लो वेवलेंथ सॉरी एटा वेवलेंथ तमरो लो हाई तापरे तार ऑपोजिट एटा फ्रीक्वेंसी आरो लो आरो हाई अगेन फ्रीक्वेंसी जेमती रहइबो एनर्जी सेमती रहइबो हला सो रेडियो वेव रो वेवलेंथ बहुत अधिका तो आरो फ्रीक्वेंसी कम आरो एनर्जी भी कम जदि एमती आमे कंपेयर करिबा तो गामा रे और एक्स रे कहारो फ्रीक्वेंसी अधिका एक गामा रे रो फ्रीक्वेंसी ता अधिका एठी तमे देखुथबो गामा रे रो फ्रीक्वेंसी अधिका एक्स रे रो फ्रीक्वेंसी गामा रे ठू कम किंतु यूवी रेज ठू अधिका तो ए ग्राफ ता प्राय तमे मन रखिबो हला विप गियर रो बुझि परथबो विप गियर रे तमरो वायोलेट इंडिगो ब्लू जो हमरो थाए तो आर रो जेतु एटा एमती बड़ी बड़ी जाउची वेवलेंथ तो आर रो सबठू हाई वेवलेंथ वायोलेट रो सबठू लो वेवलेंथ वेव गियर भितरे क्वेश्चन कौन थिला हमरो क्वेश्चन थिला which of the following correctly represents the increasing order of energy in the electromagnetic spectrum तो increasing order माने छोटो रो बड़ एनर्जी कहार कम सबुठु कम एनर्जी कहार अछि सबुठु कम एनर्जी कहार अछि रेडियो वेव रो अछि ह कि नै सबुठु कम एनर्जी कहार अछि रेडियो वेव रो अछि सबुठु अधिक एनर्जी कहार अछि कॉस्मिक रेस रो अछि एनर्जी अधिका वेवलेंथ कम एटा मन रखो एटा एनर्जी बढ़ी बढ़ी जाउची तळु ऊपर को एटा वेवलेंथ बढ़ी बढ़ी जाउची ऊपर तळु को हला तो रेडियो वेव रो सबुठु अधिका वेवलेंथ किंतु अधिका वेवलेंथ माने कोन फ्रीक्वेंसी कम माने तमरो एनर्जी भी कम
है तो छोट रु बड़ तो सबुठु छोट कार रेडियो वेव रो तापरे अल्ट्रावायोलेट तापरे गामा रेस देखिबा आउ किसी ऑप्शन ही नहीं सबुठु छोट रेडियो वेव रो किसी ऑप्शन नहीं ता तळे तमरो इंफ्रारेड अछि बट जदि आमे से टेबल मन रखिबा सबुठु छोट एनर्जी कार रेडियो वेव परे तमरो रेडियो वेव पर देखथबो यूवी रेस अछि तापरे गामा रेस अछि जोटा कि हमर ऑप्शन रे भी अछि आई गेस है कि नहीं सो एनर्जी सबुठु कम रेडियो वेव रो तापरे यूवी रेस रो तापरे गामा रेस रो एनर्जी अधिका एज कंपेयर टू एक्स रेस गामा रेस रो फ्रीक्वेंसी अधिका एज कंपेयर टू एक्स रे बट गामा रेस रो वेवलेंथ कम when compared to sorry भूल कोच मु एटा वेव हां ठीक अछि गामा रेस रो वेवलेंथ कम with respect to x-ray आम क्वेश्चन रे कोन दीची लोअर एनर्जी रु हाई एनर्जी रो असेंडिंग ऑर्डर रे हमको लिखिया रहछि तो रेडियो वेव तापरे यूवी तापरे गामा रेस जोटा कि ऑप्शन रे देइछि हैला क्लियर रेडियो वेव्स यूवी तापरे गामा रेस माने सबुठु अधिका एनर्जी कार गामा रेस ताठु कम एनर्जी अल्ट्रावायोलेट रेस ताठु कम एनर्जी रेडियो वेव्स क्लियर से ऑर्डर टा मन रखि बिकॉज़ मोस्ट बहुत थरा से गोडा से टाइप रो क्वेश्चन आसे अच्छा which of the types of radiation match the types of radiation with their key characteristics so एटी रहला तमर अल्फा रेस गामा रे बीटा रेस एंड गामा रेस सब बड़ा मन रखियो जो कैंसर ट्रीटमेंट पे गामा रेस यूज करा जाय हैला गामा रेस कोन पे यूज करा जाय बिकॉज़ से बॉडी भीतर को पेनिट्रेट करि परिबो बुझ पालो बॉडी भीतर को जदी से पेनिट्रेट इजीली करि परिबो देन ओनली से हमर कैंसर सेल्स टा को डिटेक्ट करी ताको डिस्ट्रॉय करि परिबो तो गामा रेस मोस्टली हमें कैंसर ट्रीटमेंट रे जो रेडिएशन थेरेपी यूज हुए सेथरे गामा रेस यूज करा जाय हैला तो गामा रेस अधिक पेनिट्रेट करि पारे सेति पे गामा रेस यूज करा जाय सो एठी भी हमें कहि परिबा कि गामा रेस माने मोस्ट पेनिट्रेटिंग गामा रो छोटो भाई हैला बीटा हे जिवो तमरो इंटरमीडिएट पेनिट्रेशन बीटा रो छोटो भाई होची अल्फा हे जिवो लीस्ट पेनिट्रेशन सो A3 B2 C1 will be the answer A will be the answer हैला एटा मन रखिबो गामा रेस कैंसर यूज हुए कोन पे बिकॉज़ से पूरा पेनिट्रेट करि परिबो बॉडी भितरे सेटा जदी मन रखियो बाकी दीटा भी मन रहि छिबो नेक्स्ट न्यूक्लियर फिशन in uranium 235 is accompanied by a chain reaction neutrons released during fission can trigger further fission in nearby nuclei kon hoba answer directly deichi both are correct and R is the correct explanation of A nuclear fission uranium re gote chain reaction द्वारा हुए that is correct न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड ड्यूरिंग फिशन कैन ट्रिगर फर्दर फिशन इन नियर बाय न्यूक्ली तो जेहेतु एनर्जी एते अधिका थाए तो से आउरी से जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हबो फिशन रु से माने फर्दर फिशन भी करि परिबे नियर बाय न्यूक्लियस रे सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एज वेल हला सेति पे ताको चेन रिएक्शन कहउची ना से गोटे हला परे आउतरे भी हे परिबो सो दैट इज व्हाई इट इज ए चेन रिएक्शन एज वेल Which of the following is correct regarding application of nuclear technology? Which is correct regarding the application of nuclear technology? Radio tracers are used in medical diagnostics, irradiation, can be used for food preservation cobalt therapy involves gamma radiation for cancer treatment मैं बे तुमको कहली कि gamma radiation यूज करा जाए
कैंसर ट्रीटमेंट पे है तो एटा तो ठीक 3 जदि ठीक देन ए दीटा भितर ही हम ए दीटा तो भूल हो गला तो ए दीटारे फिर आम देखियार अच्छे 1 और 2 तो 1 और 2 दीटा जाक ठीक है रेडियो ट्रेसर यूज हुए मेडिकल डायग्नोस्टिक्स रे आउ तमरो रेडिएशन यूज हुए फूड प्रिजर्वेशन में सो 1 2 3 विल बी द आंसर मु बहुत जल्दी जाउची बिकॉज़ यू नो 100 क्वेश्चंस अच्छी सरियार अच्छी अच्छा if passenger feels a jerk forward when a bus suddenly halt जेतबेले बस suddenly you know ब्रेक मारिबो then passenger को गोटे jerk feel होबो कोन पई due to inertia the body of the rest passenger tends to remain in a state of rest what which will be the correct answer which will be the correct answer जेतबेले गाड़ी जाउची हला तो बॉडी रेस्ट रे अछि ना बॉडी मोशन रे अछि बॉडी मोशन रे अछि और हठात हम ब्रेक मार देलु माने बॉडीटा हमर हठात रेस्ट रे पळि आसिला हला सो एटी कोन हो पैसेंजर फील ए जर्क कोन पे जर्क फील हुए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट हला बट कोन पे से जर्क टा ये हुए जदी से रेस्ट रे ही थांता एंड रेस्ट रे ही रहि जाई थांता ब्रेक मारला परे देन जर्क ही न थांता हला तो मोशन रे थिला बॉडी मूव होतला अलोंग विथ द बस बट बस टा रहि गला बट ये जेतु आगु को जाउथला तो से भी जर्क हे गला माने रहि गला हला तो दैट इज व्हाई जदी एठी हमरो मोशन लिखाई थांता देन ठीक हे थांता हला से मोशन रे अछि बट हठात ब्रेक मारला से रेस्ट को पळे आसिला से इथि पई से जर्क टा फील हला सो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट दिस इज द राइट आंसर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एटा तो जानथिबो it relates force to the rate of change of momentum of a body is it correct is it correct yes it relates force to the rate of momentum of a body for the same applied force a lighter object will experience greater acceleration than a heavier object obviously गोटे छोटो बॉल को आमे 1 and 3 only are you sure न्यूटन रो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कोन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सो मास सहित तुमने जो आंसर दोच मत क्वेश्चन नंबर लिखि दौत बिकॉज मत टिके लेट रे शो होची आंसर्स हैला तो मु कोटा फिर कंफ्यूज हे छी बुझ पालो हाँ सुनीता हठात ब्रेक लगे जो झटका लगिला झटका कौन पे लगिला बिकॉज बॉडी भी मूव होता बस सहित तो बस रही गला बट बॉडीटा रही टाइम लगिगला से जर्क है हाँ तो यहाँ है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जदि मास अधिका रहिबो देन फोर्स अधिका रहिबो जदि मास कम रहिबो देन फोर्स भी कम रहिबो सो फॉर द सेम अप्लाइड फोर्स ए लाइटर ऑब्जेक्ट will experience greater acceleration is correct जदि छोटो बॉल गोटे अच्छी बड़ बॉल गोटे अच्छी छोटो बॉल को मते जति फोर्स दरकार बड़ बॉल को जति फोर्स दरकार दे जन को जति मु समान फोर्स देली बट जहार वेट कम थिबो हैला लाइटर ऑब्जेक्ट जति थिबो देन से अधिक स्पीड रे जीवो बड़ बॉल माने सेम फोर्स रे से बहुत स्लो रे जीवो बुझपे जो गोटे फुटबॉल अच्छी आ गोटे छोटो यू नो पिन बॉल टाइप रो अच्छी है दी जन को मु समान प्रेशर रे फोर्स कली माने फोर्स देली तो छोटो बॉलटा स्पीड बहुत अधिक एक्सेलरेशन रे जीवो बड़ बॉलटा टिके कम एक्सेलरेशन रे जीवो सो दिस इज आल्सो करेक्ट द लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी कार्ट कंपेयर टू ए लोडेड वन जदि गोटे कार्ट एम्प्टी अछि हल्का अछि तो ताको हम इजीली पुश करि परिबा जदि सेथरे बहुत सामान हे जीवो लोडेड हे जीवो देन ताको हमको अधिक फोर्स देबा को पड़े हैला कष्ट हे जाय तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट क्लियर
चलो, which of the following phenomena with their match the following phenomena with their current corresponding example? Newton third law of conservation of energy, pressure difference, and work in physics. What will be the correct answer? Newton third law जगू a swimmer moves forward in water. Newton third law कौन हुए? For every action there is an equal and opposite reaction. है so सेइथिपाई हमरो swimmer moves forward in water because of the Newton's third law. Law of conservation of energy. So that means A is 1 है Newton to third law एटा सहित रिलेटेड आ बाकी को ऑप्शन सहित सेटा एते खाप खाउनी है तो एटा ठीक अछि. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम पावर जनरेशन है एटा डायरेक्टली B2 आमे कहि परिबा. प्रेशर डिफरेंस जगु सक्शन हुए है दीटा प्रेशर डिफरेंस जगु ही तमरो सक्शन कप स्टिक टू द वॉल बिकॉज गोटे प्रेशर अधिका थी गोटे प्रेशर कम थी तो प्रेशर डिफरेंस जो सकिंग प्रोसेस हुए तो यहाँ भी ठीक. वर्क इन फिजिक्स, पुशिंग ए बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर माने आमे जो फोर्स मास एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ सहित डील करूछु तो यहाँ आमर पूरा फिजिकल कॉन्सेप्ट हो गला है. तो वर्क इन फिजिक्स तो A1 B2 C3 D4 will be the correct answer. Yeah. But Sunita, why are you late? हमें 15टा क्वेश्चन डिस्कशन करला परे तमे जॉइन करलो. अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट प्रेशर. सेम फोर्स पाई गोटे स्मॉलर सरफेस एरिया will produce higher pressure. Wide caterpillar tracks of the tanks reduce the pressure exerted on the ground. तापरे atmospheric pressure increases as one goes to higher altitudes. एटा तो देखो देखो जने कहबो कोटा ठीक. देख जिते ऊपर को आमे जिबा हमर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेठी कमी जिवो. ऑक्सीजन लेवल कमी जाए ना जितले आमे अधिका हाइट को जाऊ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से केस रे डिक्रीज हो जाए. तो देखो देखो जने कहबो कि स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. तो जदि स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग ए दीटा रॉन्ग हो गला हैला. वी आर लेफ्ट विथ 1 and 2. फॉर द सेम फोर्स a smaller surface area produces high pressure. It is right है same force पाई जदि surface area तमरो small अछि ठीक अछि सुनीता. तो सेम फोर्स पाई जदि तमरो surface area small अछि then सेठी pressure अधिका रहइबो आ wide caterpillar tracks of the tank reduce the pressure exerted on the ग्राउंड सेटा भी ठीक. तो जति भी प्रेशर तमरो से ट्रैक्स नहीं जीवो आ ग्राउंड ऊपर प्रेशर तमरो कम पड़िबो. तो 1 and 2 बी टाइट ठीक बट 3 टाइट भूल हो गला. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हैला. नेक्स्ट, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए पेंडुलम स्विंग द बॉब हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड जीरो पोटेंशियल एनर्जी. एमती जति आमे जिबा सॉरी पारिबो तो 100टा क्वेश्चन आई डाउट. अच्छा, energy continuously transforms between kinetic and potential but the total remains constant. कौन हबो? A is incorrect but R is correct है. At the highest point of the pendulum swing the bob has maximum kinetic energy and zero potential energy है. एटा भूल.
and energy continuously transforms between kinetic and potential, but the total remains constant. So this is right. With reference to work and power, consider the following. कोटा ठीक हबो ए भितरु work is done even when a force is applied but the object does not move. Object move न हेले work done कहि परिबा कि हमें ताको हला displacement न हेले work हे परिबनी हला तो एटा तो भूल हे गला किछि displacement हबार अछि गोटे जिंस move हेले ही गोटे जिनस मूव हेले ही हमें ताको वर्क डन हिसाब रे कहि परिबो तो 1 तो एठी भूल हे गला जदि 1 भूल हे गला तीनटा ऑप्शन एठी ही कैंसिल आउट हे गला बुझ पलो तो एटा हम डायरेक्टली 2 and 3 करि परिबो अच्छा ऑलरेडी मु तुमको कहली क्रिस एटा कोटे कोन जीन एडिटिंग टेक्निक जो थरे हमें कोन करू गोटे आरएनए रिपेयर करे डिफेक्टिव डीएनए को रिपेयर करे हैला तो ए CS9 गोटे कोन हमर मॉलिक्यूलर सीजर ऑलरेडी ए क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिथिलु ऊपर तो एठी कोन देछि इट रिलाइज ऑन गाइड डीएनए टू आइडेंटिफाई ए टारगेट डीएनए सीक्वेंस इट इज राइट हैला इट इज राइट The Cas enzyme makes cuts in DNA at non-specific location. RNA cut करे DNA को सेटा ठीक हैला किंतु precise location रे गोटे specified location रे cut करे ना कि random location non-specific location है जदि non न थांता एटा ठीक हे थांता आरएनए मॉडिफाई करिवो डीएनए को डिफेक्टिव डीएनए को ताको काटी की बट को पॉइंट रे काटिबो स्पेसिफाइड पॉइंट्स रे काटिबो रैंडमली को भी जगह रे काटिबोनी हैला तो सेति पे ए स्टेटमेंट ता रॉन्ग हे जाउची बिकॉज़ इट इज नॉन स्पेसिफिक लिखा है जी इट इज फास्टर एंड चीपर कंपेयर्ड टू ओल्डर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी दिस इज राइट हैला सो आंसर 1 and 3 विल बी राइट तो ये जो CRISPR Cas9 रो काम हला से गोटे गाइड आरएनए यूज करे गोटे डिफेक्टिव डीएनए टाको रिपेयर करिया पे ताको अलगा जगह रे काटी की हैला ताको अलगा जगह रे काटी की तो स्पेसिफाइड लोकेशन रे काटी की यूज होबो ना कि नॉन स्पेसिफाइड लोकेशन रे एटा मन रखियो जीन थेरेपी कैन पोटेंशियली क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर it does so by delivering functional genes into a patient cell using a vector which is correct both are correct है जीन थेरेपी हमें जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर करिया पे यूज करू है इज करेक्ट कौन पे बहुत जगह जेन कहली तुम जीन थेरेपी कैंसर ट्रीट करिया पे भी हेल्प करे कैंसर भी गोटे जेनेटिक डिसऑर्डर हमें कहि परिबा जदी तमरो पेरेंट्स को कैंसर हेई थिला देन यू हैव माने पोटेंशियल तमरो भी अछि कि तुमको there is a possibility that you can have cancer in future 100% ठीक no भी पारे बट हे पारे जेमती डायबिटीज जदी बापा मां को अछि हमको हे पारे कैंसर भी सेमती हे पारे बिकॉज़ दिस इज इन आवर जीन्स तो दैट मींस जीन थेरेपी जीन को क्योर करि परिबो जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर करि परिबो हैला but it does so by delivering functional genes into a patient cell using a vector. This is also correct. हैला तुम कहली डिफेक्टिव जीन को से क्योर करिवो करेक्ट करिवो तो फंक्शनल जीन को से इंसर्ट करिवो पेशेंट रो सेल सहित रिप्लेस करिवो so this is also correct so both A and R are correct and R is the correct explanation of A again it asigula amaro Sunita we have already discussed this inactivated vaccine रे कोन हुए दुर्गा we have discussed it right inactivated vaccine रे आमे डेड वायरस को डेड बैक्टीरिया को बॉडी भीतर पठाओ वायरल वेक्टर रे वीक वायरस रो शेल को पठाओ भीतर आमे मॉडिफाइड डीएनए को पठाओ इन प्लेस ऑफ आरएनए हमें मॉडिफाइड डीएनए को पठाओ एमआरएनए रे ओनली तारो
जेनेटिक मटेरियल टा ही पठा जाए हला एमआरएनए वैक्सीन रे ओनली जेनेटिक मटेरियल पठा हुए गोटे वायरस रो किंबा गोटे बैक्टीरिया रो आ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज रिकॉम्बिनेंट रे सब यूनिट और रिकॉम्बिनेंट से गोटे जिंस माने गोटे वायरस रे गोटे डिजीज रो हमें गोटे पार्ट ही पठाऊ आम बॉडी को तो ये भितर कोटा हम आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रे भी हमर कोन थिला हेपाटाइटिस बी सब यूनिट रे आस्थिला हैला तो एठी भी हमें हेपाटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट सहित लिखि परिबा D4 हे गला D4 हे गला माने एटा तो कटि गला हैला बाकी तीनटा ऑप्शन भितर कोटा गोटे हबो कोविशील्ड आ कोवैक्सिन एटा भी कहैथिला हमरो कोविशील्ड कोन कोविशील्ड गोटे वायरल वेक्टर हैला कोविशील्ड इज ए वायरल वेक्टर तो B3 हे गला तो B3 माने गोटे ऑप्शन रही गला बाकीटा चेक भी कर दो एमआरएनए वैक्सीन पी फाइजर बायोएनटेक टा एटा गोटे एमआरएनए वैक्सीन जो थरे कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया इज सेंट इनटू द बॉडी तापरे रहिला तमरो कोटा A2 इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज कोवैक्सिन आई थिंक सेठी भी हमें डिस्कशन करथिलु कोवैक्सिन थिला इनएक्टिवेटेड वैक्सीन रे कोवैक्सिन यूज हेची माने डेड वायरस को हमें पठेथिलु बॉडी को सो A1 हे गला सॉरी A2 हे गला एंड C1 हे गला हैला सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर with reference to monoclonal antibodies consider the following they are delivered from multiple immune cells to target a range of antigens एटा जो देखिबो स्टेटमेंट 1 एठी भूल they are derived from multiple immune cells no but rather single immune cells to target a range of antigens mono माने कोन बुझो mono माने single ना mono माने single poly माने many हला तो mono माने जति single so it is derived from single immune cell not multiple immune cell हला तो एटा भूल हे गला किंतु बाकी दीटा ठीक ही गला हैला दे आर अप्लाइड बोथ इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आउ डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट पाई भी यूज हुए डायग्नोस्टिक पाई भी यूज हुए एंड सेमान को लैब रे ताको इंजीनियर करा जाए विथ हाई स्पेसिफिसिटी सो 2 and 3 आर करेक्ट हैला नेक्स्ट देखो बायोरिमिडिएशन इज अ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच टू क्लीन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो जो हमरो कचड़ा गुड़ा को जोठी स्टोर होगी थाए ना तो सेठी बायोरेमिडिएशन प्रोसेस यूज कराए जाए जो थरे कि तमरो एनवायरनमेंट को क्लीन करिवार प्रोसेस सेटा गोटे हला एंड इट इन्वॉल्व्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज द स्टेटमेंट 2 करेक्ट इज द स्टेटमेंट 2 करेक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज करा जाए नहीं हैला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज करा जाए नहीं रादर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करा जाए जेमते कि बैक्टीरिया फंगाई एमन को यूज करा जाए हैला एटा ठीक अछि टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज करेक्ट बट कौन यूज करा जाए से प्रोसेस रे बैक्टीरिया किंबा फंगा यूज करा जाए सो A is correct but R is not the correct explanation of A or R so incorrect option C will be the correct answer R is incorrect hela acha which of the following correctly is correctly matched cryo preservation mu तुमको कहि थली ठीक अछि दुर्गा नो इश्यूज बट रिकॉर्डिंग देखि दबो हला बिकॉज एबे टेक्नोलॉजी पार्ट धीरे धीरे आई थिंक लास्ट आड़ को अच्छी सो क्रायो प्रिजर्वेशन माने कोन क्रायो माने म तुमको कहथली क्रायोजेनिक इंजन हम यूज करू कोन पे लो टेम्परेचर रे स्टोर करिया पे सो लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल
at very low temperature. Cryo माने low temperature सब बड़े बुझी जीवो हैला. So one is correct. Micropropagation is multiplication of endangered plant species through tissue culture. Is it correct? Is it correct? It is also correct. It is the multiplication of micropropagation. Propagate करिवा माने multiply करिवा हैला through tissue culture. So this is also correct. Next है zoonotic diseases transmitted only between animals and never to humans. सुनीता हम इटे क्लास रे भी डिस्कशन करथिलु. zoonotic diseases माने कोन? Animals to humans को हे पारे, human to human भी हे पारे, but mostly zoonotic केतेबेला हमें कहबा जेतेबेला सेटा animal to human को हुए हैला. So नेवर टू ह्यूमन्स अच्छी तो एटा पूरा भूल. एनिमल टू एनिमल हबो, नेवर टू ह्यूमन हबो, एटा तो ठीक नुह हैला. तो 3 जति भूल हे गला एंड 1 2 रही गला, तो बी इज द करेक्ट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजीज इकोलॉजी. डिजीज इकोलॉजी रिगार्डिंग किछटा स्टेटमेंट देछि. इट स्टडीज डिजीज पैटर्न्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ host, pathogen, environment, interaction. Is it correct? It is correct है तमरो इकोलॉजी माने हम कोन बुझुछु हमरो एनवायरनमेंट भीतर रिलेशनशिप. तो डिजीज इकोलॉजी माने एनवायरनमेंट रो इंटरैक्शन निहाती रहबो. इकोलॉजी टर्म अछि माने एनवायरनमेंट इंटरैक्शन निहाती रहबो, होस्ट रो पैथोजन रो एनवायरनमेंट रो इंटरैक्शन हैला. zoonotic diseases are excluded from this study since they are animal specific. Is it correct? It is wrong. Hello, it is wrong. Because zoonotic हम पढ़िलु animal to human को हुए हैला. तो environment सेतरे भी involved आउ ecology मु कहली environment involved थिबो. तेमती नुह कि इट इज ओनली रिलेटेड टू माने प्लांट्स एंड ऑल. इट इज zoonotic diseases भी इतरे included अछंती, तो excluded नुह. zoonotic diseases are also included. environmental तमने इस स्टेटमेंट भूल, इस स्टेटमेंट ठीक हैला. जदि स्टेटमेंट 2 भूल ऑटोमेटिकली ये तीनटा भूल हो गला. तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ ऑप्शन बी हैला. एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज increases the zoonotic spillover risk. That is also correct हैला. बाप रे कितने क्वेश्चन रहिला रे. Agricultural biotechnology contributes to sustainable food security. It helps in developing genetically modified crops resistance to pests and drought, thereby reducing chemical pesticide use, which is correct. कोटा माइंड रे पसुनी जेति कि मु बुझेली किछि पसुनी. मु जेति कि बुझेछि सेति कि पसि कि नै. एटलीस्ट हमें 40 टा क्वेश्चन तमे तो मिड माने डिस्कशन रे जॉइन करलो, बट जेति कि डिस्कशन करलो किछि पसुनी. सुनीता अच्छा. एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी है. आम बायोटेक्नोलॉजी वर्तमान ये यूज करुचु कि सब जगह आम सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट आनी परिबा है. एंड इट हेल्प्स इन डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रेजिस्टेंस टू पेस्ट. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये करा जाए सो दैट दे कैन बी पेस्ट रेजिस्टेंस है. तो यहाँ भी आमर ठीक. तो जदि आम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करवा देन से केसेस रे आम केमिकल पेस्टिसाइड यूज करबानी. केमिकल पेस्टिसाइड रो यूज कम हो जिवो. तो जदि आम केमिकल पेस्टिसाइड रो यूजेस कम करवा देन वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एरिया एज वेल है.
So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A as well. So option A will be correct. With reference to One Health approach, which of the following best reflects its principle? এটা কোন হবে आंसर? One Health माने the health of humans, animals and ecosystem is interdependent. এই স্টেটমেন্টটা हमको ठीक লাগুଛି ହଁ କି নাই? এটা ବି କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ. Human health can be ensured, ମାନେ ଏଇଟା ବି କିଛି ଯଦି ଦେଖିବା, human health can be ensured without considering the environmental factor. ଆମ ଯୋଗୁ environmental changes ଆସେ, environmental changes ଯୋଗୁ human କୁ ବି affect ହବ, ତ ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଲା. It focuses solely on eradicating zoonotic diseases. One Health ର ମାନେ ଏଇଟା ନୁହଁ कि ଖାଲି ଆମେ zoonotic diseases को eradicate କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ. এটা only emphasize করে genetic engineering को, एटा भी भूल है ना. एटा ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमरो हेल्थ एनवायरनमेंट सब इंटर रिलेटेड. एनिमल्स रो जेतु जति एनिमल माने कंटामिनेट हेबे, आमे तांगोटू कंटामिनेट हबा तो जूनोटिक डिजीज हमको हेई परिबो. तो समस्त इंटर रिलेटेड, एमति नो के का सହିତ कार रिलेशन नाही. दैट इज व्हाट वन हेल्थ अप्रोच माने हैला. तो 43 विल बी बी. Which of the following correctly describes advantages of CRISPR over the older gene editing technique? तो इरा में already discussion कलु. CRISPR कौन वे गोटे RNA गाइड RNA यूज करा जाए गोटे डिफेक्टिव DNA को मॉडिफाई और रिपेयर करिया पई हैला. तो RNA तो निहाती दरकार, गोटे गाइड RNA निहाती दरकार. So it लिखी does not require any RNA. इटा तो भूल ही गला. जदि इटा भूल ही गला, इदी इटा भूल ही गला हैला. It is cheaper and faster. जेते के नुआ टेक्नोलॉजी हमें यूज करिबा, ओल्डर टेक्नोलॉजी टू सेटा चीपर और फास्टर हबो, तो इटा तो ठीक हैला. And it is more accurate and efficient. नुआ टेक्नोलॉजी माने obviously it will be more accurate हैला and efficient. So 1 and 2 is correct, but it इटा भूल ही गला. It does require RNA हैला. Again गगनयान मिशन विषय में डिस्कशन करथिलु. It aims to send 3 astronauts to a 400 kilometer orbit for a 3-day mission. That is right. Low earth orbit को पठेबा हमें 400 किलोमीटर दूर रे 3टा एस्ट्रोनॉट्स को पठा जिवो, एम करा हेची. That is correct. Statement 1 is correct. The mission uses a human-rated version of the LVM-3. Is it correct? It is also correct. हैला. LVM-3 rocket रे सेटा यूज करा जिवो. तापरे Vyomitra is a humanoid designated to replace astronauts in the final crewed flight. एटा भूल हे गला. Vyomitra यूज हबो, गोटे humanoid robot यूज हबो, बट को स्टेज रे आमे पढ़थिलु गगनयान रो जो फाइनल G3 हबो हैला. फाइनल G3 ना G3 बदे. तो फाइनल जो मिशन हम सितरे ह्यूमन जिबे हैला, किंतु ता पूर्वरु आमे रोबोट को पठेबु. फाइनल रे रोबोट को पठा जिवो नाही हैला. तो दिस इज भूल. व्योमित्र को आमे अनमैन्ड मिशन रे खाली ताकू ही पठेबु. सो एटा तो भूल हे गला. तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ 1 and 2 only हैला. 3 टा भूल हे गला. 3 टा भूल हो तमे ए 3टा ऑप्शन कैंसिल हे गला. गगनयान इंक्लूड्स ए क्रू एस्केप मिशन. एटा तो ठीक एबे रिसेंटली हमें पढ़िथिलु हैला. गगनयान रे क्रू एस्केप मिशन थाए जोथरे कि जदी लॉन्च हैला परे किछि असुविधा हैला, देन क्रू माने सेटु एस्केप करि परिबे हैला. So the crew escape system is designated to ensure safe astronaut ejection in case of launch anomaly. तो launch रे जदी किछि गड़बड़ हैला, then crew से माने escape करि परिबे हैला. So this is right. This is also right. So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Match the following space missions with their primary objectives. Aditya L1 study solar corona and solar winds हैला. एटा तो हमें पढ़ी थिलु. आदित्य L1 मिशन हमें
सन रो स्टडी पाई कोरोना रो स्टडी पाई सन रो जो आउटर लेयर कोरोना ताको स्टडी करिया पे और सोलर विंड को स्टडी करिया पे हमर ऑब्जेक्टिव अछि चंद्रयान 3 रे हमर ऑब्जेक्टिव थिला सॉफ्ट लैंडिंग हैला सॉफ्ट लैंडिंग तापरे स्पीयर एक्स और गगनयान स्पीयर एक्स जदि तुम जानी भी ना हो गगनयान तो जानी छ गगनयान हमर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन हैला तो A3 आमे जानिलु B2 आमे जानिलु D4 आमे जानिलु तो D4 B2 कोठी अछि B2 एठी अछि हैला B2 एतिक त हमें श्योर ना B2 टा हमें श्योर अछि से गोटे जानले भी तमरो ऑप्शन बी करेक्ट हे जाउछि आगे ने तापरे गोटे जो रहला स्पीयर एक्स कोन इट इज ऑल स्काई नियर इंफ्रारेड सर्वे चला which of the following is correct about Aditya L1 mission it is placed in a halo orbit around Lagrange point 1 it is correct ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ L1 ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ କି L1 को पठीଛୁ ଆମେ L1 ରେ halo orbit ରେ place ଅଛି so this is correct it continuously observes the sun without any eclipse interruptions ହେଲା eclipse ର interruption କିଛି ରହିବନି this is an interesting topic an interesting point is it correct it is correct ହେଲା तो it is एरा L1 रे जेहेतु हमें प्लेस करिछु कौन असुविधा होछि L1 पॉइंट रे जेतेबेले हमें ताको यूज करिछु then ଟିକେ रोज देखिए okay. It studies only the sun's surface and not its atmosphere is it correct is it correct से एटमॉस्फेयर को स्टडी करिवो हैला सरफेस को भी स्टडी करिवो एंड एटमॉस्फेयर को भी स्टडी करिवो तो स्टेटमेंट 3 भूल हे गेला तो दैट मींस 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर कौन हैला या पर
ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ହଁ ଟିକେ ଆସିବ ଉପରକୁ। चलो ଏବେ ତ आई थिंक ठीक ଅଛି। हाँ तो इट स्टडीज ओनली सन सरफेस, एटा भूल गला, एटा जदी भूल गला ऑटोमेटिकली ये तीनटा भूल गला। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हैला। 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। हैंग होची आउरी अच्छी 50 मझे होता सूर्यकांत आसिक रिस्टार्ट कले फिर एमती हो So it studies only surface it only so it studies only surface surface
एटा भी जो आप प्रीवियसली जेमते खोली थिला एटा खोलो एटा कला बेल को इन दिस एटा करिथिबी देन से माने एटा होनी आ पूर्व जेमते थिला हां हां अच्छा हाँ जी एबे ठीक सुबुची की अच्छा HOP experiment demonstrated using Chandrayaan-3 mission is significant because it tested a new orbital maneuver for Mars mission. It showed the capability of the lander to lift and re-land, useful for sample return mission. It was a demonstration of ISRO's first cryogenic lunar engine and it enabled deployment of extra lunar rovers. Hela the HOP experiment Chandrayaan-3 mission lekha heichi during Chandrayaan-3 mission. तो Chandrayaan-3 mission माने obviously Mars mission ei option टा ही cancel हे गला. Chandrayaan-3 तो हमरो moon पे हला तो इटा तो cancel हे गला. It showed the capability of the lander to lift and re-land, useful for sample return missions. Sample return mission हमरो हे नहीं पर्यंत. चंद्रयान 4 5 रे हमें सैंपल आनिबा हला तो एटा पर्यंत हेई नाही सैंपल आनिबा प्रोसेस किछि हेई नाही टेला इट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इसरोस फर्स्ट क्रायोजेनिक लूनर इंजिन एटा अच्छा इट शोड द कैपेबिलिटी ऑफ द लैंडर ए पर्यंत हेई नि सैंपल रिटर्न मिशन बट से कैपेबिलिटी शो कला के जो हमर विक्रम लैंडर हमें पठै थिलु तो तार कैपेबिलिटी अच्छी से सैंपल पठै परिबो जोटा कि हमर चंद्रयान 4 5 रे हबार अछि चंद्रयान 4 रे खास करके हमें सैंपल आनिबो यूजिंग द हॉप एक्सपेरिमेंट टेक्निक हला तो से हॉप एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करा जायथिला with the Vikram lander during the Chandrayaan 3 mission. So option B is correct. Hala, but मन रखिबो ए पर्यंत हमें सैंपल आनी की आसीनु एठी. It was a demonstration of ISRO's first cryogenic lunar engine. It is totally wrong. It enabled deployment of extra lunar rovers. एटा भी भूल obviously एटा तमे मन रखिबो. HOP experiment Chandrayaan 3 रे Vikram lander रे से capability देखैथिला कि हमें सेठु सैंपल आनी परिबा. So which will be applied in Chandrayaan 4. SpearX mission of NASA is primarily aimed at. Previously dita question पूर्वरु हमें देखिथिलु SpearX कहारो mission NASA रो ISRO रो तो नहीं हला तो से कोन करिवो it will study the moon surface or it will conduct an all sky near infrared spectral survey तो एटा गुटे survey हला this is a survey so एटा मन रखिबो SpearX माने सेरा गुटे survey all sky near infrared spectral survey by NASA. Testing exoplanet atmosphere eta bhul, detecting gravitational wave from early universe eta bhul. So it is a survey basically seta hame man rakhiya. Consider the following statement about Agni Ban rocket. Agni Ban rocket kona? It is developed by Agnikul Cosmos. Nata misuchi Agni Ban Agnikul. Hala to which is a private Indian startup. Yes, it is correct. It features the world's first single piece 3D printed rocket engine. It is also correct. Hela to Agni Ban ta सब बड़े मन रखिबो. It is a 3D printed rocket. 3D printing technology में आजकल यूज करूछु. तो 3D printing technology यूज करके गोटे रॉकेट भी बना हेछि अग्नि बाण एंड किए बनैछि अग्निकुल कॉस्मोस बनैछि. It has a payload capacity of over 5000 kg to the geo stationary orbit हला और जियो ट्रांसमिट ऑर्बिट से ऑर्बिट को 5000 केजी पर्यंत से पठै परिबो एटा ठीक की
इज इट करेक्ट एटा भूल 300 केजी पर्यंत से पठे परिबो हैला 300 केजी पर्यंत से पठे परिबो सो 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर अग्निकुल कॉस्मोस बनेची 3D प्रिंटिंग रॉकेट बट से 300 केजी ही पठे परिबो एंड 5000 केजी पठे परिबोनी तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग नेक्स्ट जदि हम देखिबा हाइपरसोनिक वेपन्स आर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट क्लास रे ऑलरेडी मु पढै छी हाइपरसोनिक इंजन कोटा हमरो ब्रह्मोस ना अग्नि 4 अग्नि 5 कोटा हाइपरसोनिक केते बेला हम कहबा जारो स्पीड माने जारो मार्च नंबर केते थिबो दुर्गा एंड सुनीता हाइपरसोनिक केते बेला कहबा सुपरसोनिक केते बेला कहबा सबसोनिक केते बेला कहबा मार्च नंबर केते थिले ताको हाइपरसोनिक कहबा हला तो सेरा मते कहो एंड हाइपरसोनिक वेपन्स आर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ला बेला हमें पढ़थिलु क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करिबाटा डिफिकल्ट इंटरसेप्ट करियाटा डिफिकल्ट आ गोटे पढ़थिलु हमें डिटेक्ट करियाटा डिफिकल्ट कोटा इजीली डिटेक्ट हे परिबो कोटा इजीली इंटरसेप्ट हे परिबो हैला तो फर्स्ट हमें जदी देखिबा जे गुडा को लो अल्टीट्यूड रे जानती तांको हमें डिटेक्ट करिवाटा डिफिकल्ट बट ताको जदी थरे डिटेक्ट हे गला ताको हमें इजीली इंटरसेप्ट करि परिबा तो क्रूज मिसाइल गुडा को इजीली इंटरसेप्ट करि हबो बट आर हार्डर टू डिटेक्ट जेमति कि ब्रह्मोस मिसाइल वेरेज जति कि भी हमर बैलिस्टिक मिसाइल जो माने अधिका एल्टीट्यूड रे जानती अधिका हाइट रे जानती हमें तांको इजीली डिटेक्ट करि परिबा किंतु इजीली इंटरसेप्ट सेमान को हमें करि पारुनो हला तो हाइपरसोनिक वेपन्स आर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट गोटे कहि छी आउट कहि छी दे फ्लाई एट लोअर एल्टीट्यूड्स देन बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज करेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल हायर एल्टीट्यूड रे जाए क्रूज मिसाइल गुडा को लोअर एल्टीट्यूड रे जाए एंड आर हाईली मैन्यूरेबल तो कोटा ठीक हबो बोथ ए एंड आर करेक्ट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए या फिर दीटा भूल दीटा ठीक कोन हबो हला both A and R are correct and R is the correct explanation of A हला तो एठी तमरो क्रूज मिसाइल लिखिनी कि बैलिस्टिक मिसाइल लिखिनी एठी लिखि छी हाइपरसोनिक वेपन आर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट अग्नि 4 अग्नि 5 ता हमरो गोटा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हला तो ताको इंटरसेप्ट एते इजीली करि हबनी इजीली डिटेक्ट करि हबो बट इजीली इंटरसेप्ट करि हबनी तो दिस इज करेक्ट आउ they fly at lower altitude than ballistic missile that is also correct hala match the different types of hypersonic with their feature acha hypersonic glide vehicle hypersonic cruise missile au HSTDV तो ये तीनटा का सहित हमर लिंक हबो ग्लाइड अछि ग्लाइड सहित ग्लाइड हमें ऑटोमेटिकली एठी मैच करि परिबा hypersonic glide vehicle माने these are launched by rocket then glides to target हैला तापर एटा गोटी जदी मैच हे गेला A2 कोठी गोटी अछि हमरो ए बी टा तो कैंसिल हे गेला डी कैंसिल हे गेला नाउ वी आर लेफ्ट विथ A2 माने ए ऑप्शन सी ऑप्शन तो इधर B1 और BC हमहु जेमते ले भी न जानले हबनी तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पढी छ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रे स्क्रैमजेट इंजन यूज करा जाए ना सस्टेन फ्लाइट मोशन यूज करा जाए आउ और स्क्रैमजेट बेस्ड टेस्ट व्हीकल अचीविंग मैच 6 कोड आइथिबो भाबछो तमे सुनीता इज सेइंग ए यस सो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रे स्क्रैमजेट इंजन यूज हुए आ HTDDV जोटा हला सेटा होची गोटे टेस्ट व्हीकल जे कि हाइप माने मैच स्पीड तारो 6 था ए टेस्ट व्हीकल रो आरो मैच 6 न जेतु एटा गोटे मिसाइल रे इंजन अछि हला तो मिसाइल रे स्क्रैमजेट इंजन अछि एटा गोटे टेस्ट व्हीकल से नु हाइपरसोनिक मिसाइल गोटे टेस्ट व्हीकल हबनी दैट इज ए इंजन माने पावर्ड बाय स्क्रैमजेट इंजन आ HTDV टा गोटे हमरो टेस्ट व्हीकल सो C विल बी 3 B टा हे गला हमरो 1 A टा हे गला 2 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल launched by rocket then ताको glide करा जाए so A is the correct answer
which of the following correctly describes India's hypersonic technology demonstrated vehicle? एबे ही हमें पढ़लु HTDV कौन करे scramjet based test vehicle जार मार्च नंबर 6 हला तो ये directly लिखा है कि scramjet based technology demonstrated that flew at March number 6 March 6 माने कौन hypersonic ना supersonic more than 5 अच्छी माने that will be hypersonic हला 1 to 5 हेले supersonic 1 to कम हे गले that will be subsonic so it is a scramjet based technology demonstrated that flew at March 6 clear अच्छा in the defense application artificial intelligence कोठी यूज करा जाए इंटेलिजेंस रे सर्वेलेंस रे और रिकग्निशंस रे हैला दैट जो हमर सर्वेलेंस और रिकग्निशंस हमें रिलेट करके पढ़ी परिबो रिकग्निशंस में बारंबार कहिछि द कोनोसी जगह रे सर्वे करिया को गले फर्स्ट स्टेप हैला रिकग्निशंस इज द फर्स्ट स्टेप इन ए सर्वे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोठी पे यूज हुए इंटेलिजेंस ऑब्वियसली नाटा अछि इंटेलिजेंस माने इंटेलिजेंस रे यूज हबो सर्वेलेंस रे पई भी यूज हे पारे हैला ड्रोन गुडा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजिकली ड्रोन भी सेमती यूज करा होचे तो से माने कोन करंजी सर्वे करजंती सर्वेलेंस करजंती एंड reconnaissance is also a part of survey as I said improving battlefield decision making ठीक आजिकली आम डिफेंस रे भी एआई एमती आणुचु यूज करूचु हैला आउ डिजाइनिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर रे हम एआई वर्तमान पर्यंत यूज करिनु हैला बहुत ही यू नो सेंसिटिव टॉपिक एटा न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर रे हम ए पर्यंत एआई डिपेंडेंट हे ना तो दिस इज रॉन्ग बाकी साइबर सिक्योरिटी रे ऑटोनोमस सिस्टम रे भी एआई वर्तमान हमरो यूज होची सो 1 2 and 4 will be the correct answer hello next India tested Agni 5 with MIRV technology already हम एटा पढिछु MIR Agni 5 रे MIRV technology यूज हेतिला दिव्यास्त्र मिशन तार ना थिला राइट तापरे एबे जो आउथरे अग्नि 5 टेस्ट हेछि सेतरे हमरो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टा टेस्ट हेछि माने केते रेंज पर्यंत से जाई परछि तो ताको हमें आईसीबीएम कैटेगरी रे रखि परिबा सेटा एबे टेस्ट हेछि बट एमआईआरवी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हे सारिछि आगुरु जोटा कि हमरो थिला मिशन दिव्यास्त्र तो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी रे हमें पढिथिलु गोटे मिसाइल यूज होबो माने गोटे मिसाइल रे बहुत सारा वारहेड्स थाए जोटा कि अलग अलग जगह को टारगेट करिकि हमें पकई परिबा गोटे मिसाइल थ्रू रे राइट सो एमआईआरवी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री-एंट्री टारगेटेबल व्हीकल allows a single missile to strike multiple targets with independent warheads गोटे मिसाइल रे हमें पांचटा वारहेड पठे की इंडिपेंडेंटली अलग अलग टारगेट को टारगेट करि परिबा सो बोथ आर करेक्ट राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्लियर नेक्स्ट again Agni 5 directly it can be linked to this intercontinental ballistic missile जो कि MIRV technology use होची multiple independently re-entry vehicle हैला तो this is correct आ गोटा हमें पढ़ी थिलु एबे रिसेंटली HGV कोन जी माने कोन ग्लाइडिंग व्हीकल तो ग्लाइडिंग व्हीकल माने आपको हमें आसो तो रिलेट करि परिबा रॉकेट लॉन्च्ड व्हीकल ग्लाइडिंग टू टारगेट काली जदी भी तुम जानि न हम पढिनु ए पर्यंत काली कोन हला किंतु HCM hypersonic cruise missile so that we can link to this scramjet engine powered hypersonic missile तो बाकी रह गला गोटे काली काली कोन directed energy weapon producing high power microwaves हला तो 1 2 3 4 will be the correct answer clear एटा ऑलरेडी तीनटा जिंस हमें ए पर्यंत जानि सरलोनी एटा जदी भी तुम जानि न ऑब्वियसली आ गोटे रहला माने सेटा ही हो नेक्स्ट एबे जस्ट काली पढिलो तो विथ रेफरेंस टू काली प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग इट इज अ लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर नॉट ए लेजर सिस्टम इट कैन जनरेट हाई पावर माइक्रोवेव्स कैपेबल ऑफ डिसेबलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एबे जस्ट हमें एटी देखिलु डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इंट्रोड्यूसिंग हाई पावर माइक्रोवेव्स हैला तो एटा तो ठीक हे गला जदी टू ठीक एटा गोटे कैंसिल हे गला बाकी तीनटा भितरे कोटा गोटे हबो its operational status is fully declassified and public is it correct
डिक्लासिफाइड लिखी डिक्लासिफाइड नुह क्लासिफाइड जदि होता ठीक होता है वर्तमान ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ काली इज अंडर क्लासिफाइड एंड इट इज पब्लिक डिक्लासिफाइड हेनी तो स्टेटमेंट 3 इज wrong. So we are only left with 1 and 2 only. DRDO developed HSTDB scramjet based vehicle जोटा मैं बेबे पढ़िलु हैला आउ आईआईटी कानपुर कौन डेवलप करथिला इसरो कौन डेवलप करथिला तो which of the pairs are correctly matched कोटा तमे आमे जानि छु बहुत क्लियरली इसरो व्योममित्र ह्यूमनॉइड एंड गगनयान सीएस एटा तो आमे जानि छु सो 3 टा तो करेक्ट हैला 3 टा करेक्ट तो इटा रॉन्ग हे गला बाकी एक दुई देखिबा HSTDB स्क्रैमजेट बेस्ड व्हीकल डीआरडीओ बनेथिला ना एटा डीआरडीओ बनेथिला डीआरडीओ आईआईटी कानपुर कोटा कोन बनेथिले डीआरडीओ HSTDB स्क्रैमजेट इंजन बनेथिला हैला आईआईटी कानपुर हमर हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फॉर हाइपरसोनिक रिसर्च बनेछि सो ऑल 3 आर करेक्ट क्लियर नेक्स्ट व्योममित्र हमें पढ़िलु गगनयान रे पठेबु हमें बिफोर द फाइनल ह्यूमन मिशन जुतरे हमें ह्यूमन को पठेबु ता पूर्वरु हमें रोबोट को पठेबु से रोबोट रो ना हैला व्योममित्र तो ता रिगार्डिंग किछटा स्टेटमेंट देछि it is a full humanoid robot with both arms and legs एटा भूल हैला humanoid robot but only with arms तार गोड़ो नहीं से रोबोट रो खाली हाथ अछि हैला तो एमतिया क्वेश्चन भी पड़ी परे हाथ गोड़ो कोटा अछि तो इट इज करेक्ट दैट इट इज अ फुल humanoid robot but तार गोड़ो नहीं तो इट इज भूल it will fly on uncrewed test mission that is right final crew पठेबा पूर्वरु आमे गोटे खाली रोबोट को पठेबु तो this is correct it can interact with astronauts in hindi and english this is also correct से astronaut मन को सहित interact करि परिबो हिंदी रे इंग्लिश रे हैला so option 2 and 3 is the correct answer kisan drones have been deployed in indian agriculture they are used for crop assessment pesticide spraying and digitization of land records तो किसान ड्रोन्स हमें कौन में यूज करू किसान ड्रोन्स कौन पे यूज करू दीड जाको करेक्ट हैला इंडियन किसान रो ना रु ही बुझुथबो फार्मर्स मान को पय एग्रीकल्चर सहित रिलेटेड तो से माने कोन करिवे क्रॉप को एसेस करिवे ऊपर जो हम पेस्टिसाइड्स पकोउछु हला स्प्रिंकल मेथड यूज करी की तो पेस्टिसाइड स्प्रेइंग भी करिवे एंड डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हला लैंड रिकॉर्ड रो गोटे डिजिटल रिकॉर्ड भी रहिबो सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए match the following with the domains defense judiciary governance healthcare कौन बुझुचो एटी healthcare अछि diagnosis through medical imaging हैला medical imaging healthcare हमें सेटू ही रिलेट करि परिबा तो डीटा 4 हे गला जदी डीटा 4 हे गला और डी4 रो किछ ऑप्शन अछि कि किछ ऑप्शन ही नै दैट मींस ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी राइट डीटा 4 हे गला माने गवर्नेंस जुडिशियरी डिफेंस केमति करिवो एटा 2 डिफेंस माने प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर बीटा 1 सुभाष यूज होची जजमेंट पे जजमेंट जुडिशियरी इंटरलिंक्ड हला तापरे गवर्नेंस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी आ कुछ ऑप्शन ही नै डी4 हेल्थ केयर को हमें मेडिकल इमेजिंग सहित रिलेट करले D4 रो आउ किछि कंफ्यूजिंग ऑप्शन ही नै गोटे D4 जदी जान देलो बाकी तीनटा ठीक ही हेथियो हैला नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट्स एंड क्यूबिट्स हम पढिथिलु क्यूबिट्स ता हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी रे यूज करू जेटा कि बहुत छोटो माने बिट्स माने हमें ओनली डील करू 0 और 1 आउ क्यूबिट माने हमें तांको भितरटा नंबर्स भी स्टडी करि परिबा तो बिट्स कैन एग्जिस्ट इन 0 1 और बोथ while qubits exist only in 0 or 1 bits exist only as 0 or 1 while qubits can exist both 0 and 1 simultaneously
both bits and qubits can exist in superposition states. Bits use entanglement whereas qubits use interference. तो कोडा ठीक हबो कोडा हबो ए दीटा भितर ही कोडा ठीक हबो ए दीटा को तुमको जिबार ही दरकार नै 0 एंड 1 हमें कोन पढिलु qubits ता तमरो 0 और 1 सहित साइमल्टेनियसली रही परिबो जोटा कि हमरो न्यू टेक्नोलॉजी क्वांटम टेक्नोलॉजी रे आगुर कोन एदर 0 होतला और 1 होतला एबे कोन 0 1 साइमल्टेनियसली हम रखि परिबा इन क्वांटम टेक्नोलॉजी सो qubits exist as both 0 and 1 simultaneously but एठी कोन एठी लिखि छी qubits only 0 and 1 एटा भूल bits 0 1 both एटा भी भूल ना बिट्स टा पुराना कालिया हे गलाने एबे हमें सुपर कंप्यूटर रे हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज करछु qubits यूज करछु तो जोटा कि 0 and 1 सहित साइमल्टेनियसली एग्जिट करि परिबो तो बी विल बी द करेक्ट आंसर चलो बाकी दीटा तुमको देखिया री दरकार नै एठु ही तमरा आंसर मिल जाउछ हां जदी से दे थांता 1 and 2 2 and 3 देन हमें देखि भी थांता नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग इज कंसीडर्ड रिवोल्यूशनरी इट इज करेक्ट हैला कोन रीजन तार दोची quantum computers can solve cryptographic codes much faster than the classical computers by exploiting entanglement and superposition kon habo obviously gote revolutionary step eta हैला तो 0 and 1 हमें साइमल्टेनियसली यूज करि परछे एबे जस्ट हमें पढिलु तो सेटा हमें यूज करके बेसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स गुडा को शॉर्ट पीरियड रे हमें कवर अप करि परिबा हैला सॉल्यूशन तार बाहर करि परिबा तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इन स्पेस रिगार्डिंग किछटा देछि तो इसरो अलगा इन स्पेस अलगा एनएसआईएल अलगा अंतरिक्ष अलगा सब अलगा राइट ए माने सब अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस but in space mostly deals with privatization hela it is an autonomous nodal agency under the department of space which is correct which is correct in isro bhi department of science under hai in space bhi ta under hai nsil bhi ta under hai department of science under hai antariksh bhi department of science under तो समस्त अलगा अलगा autonomous body किए कहा पर डिपेंडेंट नुह it promotes and authorizes the activities of private players हैला प्राइवेटाइजेशन जो होची जो हमें प्राइवेट नुआ स्टार्टअप्स मन को अलाउ करूछु से माने भी बहुत सारा जिंस बनाउछने जोटा कि इसरो को हेल्प करूछु इनडायरेक्टली राइट सो ता पही इन स्पेस हमर बना जायतिला प्राइवेटाइजेशन कंपनी सहित रिलेट करके काम करि परिबे it prepares an integrated launch manifest for ISRO NSIL and private companies again private companies आसी गला हैला तो private companies रो parts किछि बनै कि then we provide it to ISRO through the in space so all the three points are correct 1 2 3 all statements are correct which of the following layers of India stack with their examples DPI जो हमें कहूजु layers of India stack तांकर किछि example देछि डिजी लॉकर रे तमर कोन रहउची केतरा लेयर रहउची को लेयर रहउची आधार आउ यूपीआई कोथरे कोटा कोन रहउची तो आइडेंटिटी जानिया पई मु डिजी लॉकर यूज करबी ना आधार यूज करबी ना यूपीआई यूज करबी कोन यूज करबी ऑब्वियसली आइडेंटिटी पे हम आइडेंटिटी प्रूफ हिसाब रे कोन यूज करछ आधार कार्ड हैला आइडेंटिटी पे आधार कार्ड यूज करछु पेमेंट पे यूपीआई यूज करछु डाटा स्टोर करछु डिजी लॉकर रे तमरा आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब जिंस हम डिजी लॉकर रे स्टोर करछु राइट सो इट इज वेरी सिंपल A2 B3 C1 A is the correct answer India has launched the India semiconductor mission आउथरे बे इंडिपेंडेंस डे स्पीच रे भी कहिथिले सेमीकंडक्टर यूनिट्स भी सेटअप हेछि ओडिसा रे विक्रम 32 बिट हमरो फर्स्ट इंडिजिनस चिप भी बनै सरलनी इंडिया राइट so India has launched the semiconductor mission it aims to establish India as a global hub for semiconductor design and manufacturing हैला तो हमको सेल्फ रिलायंस रिलायंट हबार अछि
बारठू आमको डिपेंडेंसी कमेबार अच्छी तो से सेटअप होती वर्तमान सेमीकंडक्टर यूनिट्स ओडिशा रे दीटा सेटअप होती रिसेंटली कौन पे बिकॉज आमे ही मैन्युफैक्चर करि परिबा सो दैट आमे बाहर देश सहित एते डिपेंडेंट हबानी सो वी विल बी एक्टिंग एज ए ग्लोबल हब जो आमे डिजाइन फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग सब इंडिया रे ही हबो सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा 5G टेक्नोलॉजी गला अबे 6G टेक्नोलॉजी आसीबा ऊपर अछि तो 6G टेक्नोलॉजी रे कोन हबो it will integrate terrestrial and satellite based networks it targets speeds up to 1 terabit per second it has launched the Bharat 6G vision and Bharat 6G alliance which will be correct all three are correct hala it will integrate terrestrial and satellite based network terrestrial network plus satellite based network ये जन को integrate करिवो मिसेबो it target speeds up to 1 terabit per second माने एबे कोन आमे mbps रे सब देखु छै केते mbps 100 mbps एमती सब डील करछु बट फ्यूचर it will be dealing with 1 terabyte per second speed रे आमे इंटरनेट यूजेस करि परिबा जदि 6G आसी गला and India has launched the Bharat 6G vision and Bharat 6G alliance ए पर्यंत आसीनी बट फर्स्ट हमर बीएसएनएल ही माने भारत 6G vision तो भारत 6G alliance India launch करि सच हैला सो 1 2 3 all will be correct again व्योम मित्र किसान ड्रोन ऑलरेडी सब क्वेश्चंस हम करि करि आछू हैला व्योम मित्र ensuring कोन हबो ensuring astronaut safety in Gaganyaan mission obviously आमे जदि गोटे रोबोट को आगे पठाउछु तो तार किछि हार्म कोन हार्म होछि कोन नै आमे जानि परिबा त हम सेफ्टी को आमे सेठु एक्सेस करि परिबा राइट हम सेफ्टी को आमे सेठु एक्सेस करि परिबा ह्यूमनॉइड रोबोट पठे की किसान ड्रोन्स किसान अगेन एग्रीकल्चर फार्मिंग ता सहित रिलेटेड जोथरे कि आमे पेस्टिसाइड उपरो विथ द हेल्प ऑफ ड्रोन्स आमे पेस्टिसाइड स्प्रे करि परिबा एग्रीकल्चरल लैंड उपरे तो दिस इज आल्सो करेक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग आमे पढिलु केमती सुपर कंप्यूटर्स यूज होची क्रिप्टो टेक्नोलॉजी यूज करछु आमे क्रिप्टोग्राफी रे आमे इवन ड्रग डिस्कवरी रे भी क्वांटम कंप्यूटिंग आमे यूज करि परिबा तापरे कोन हबो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हला डीबीटी जो करूछु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रे तुमको पैसा आछी स्कॉलरशिप वगैरह सब आछी थ्रू द डीबीटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल इंडिया विषय हम पढ़ी इन डिटेल तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट तो 1 2 3 4 कोडी अछि हमरो ऑप्शन सी रे हला नेक्स्ट which of the following initiatives are correctly matched with its objective NMQTA PLI scheme और भारत 6G alliance तो भारत 6G alliance तो करेक्ट promoting Indian IP creation and standard setting in 6G एटा तो करेक्ट हैला PLI scheme रे कोन हुए आउ QTA and quantum technology बुझी पर QT माने quantum technology तो that is also correct हैला तो कोन हबो एटा तो ठीक हैला एटा भी ठीक हैला PLI स्कीम हमरो इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग रे PLI स्कीम यूज करा होची पब्लिक लिंक इनिशिएटिव स्कीम तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट नेक्स्ट थोरियम 232 is a fertile material that can be converted into fissile uranium 233 थोरियम 232 को आमे यूरेनियम रे कन्वर्ट करि परिबा की कहि परिबा की स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 आज ही हम डिस्कशन करथिलो स्टेज 1 रे कोन हबो स्टेज 2 रे कोन हबो स्टेज 3 रे कोन हबो हैला तो थोरियम 232 को हम यूरेनियम 233 रे कन्वर्ट करि परिबा की obviously you can do it because it's a fertile material it can be converted into uranium 233 the second stage of India's nuclear program is based on fast breeder technology using plutonium 239 as fuel हैला
सो दैट इज आल्सो करेक्ट हैला सेकंड स्टेज रे हमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज करछु जे कि प्लूटोनियम 239 फ्यूल हिसाब रे यूज करिवो फर्स्ट स्टेज रे प्लूटोनियम 239 यूज होची सेटा यूज करके सेकंड स्टेज रे हमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज करछु थर्ड हैला कामिनी रिएक्टर इज इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल power producing thorium based reactor. Now is this correct? Is this correct? It is wrong. Hela it is not a power producing thorium based reactor but it is an experimental. Hela it is an experimental based reactor thorium based reactor but not power producing. तो एटा भूल हे गेला amaro 1 and 2 only is the correct answer. India is actively developing small modular reactor regarding gote question भी हमें करथिलु actively India वर्तमान develop करूची कोन पे because they designed to be modular small अछंती तो that are modular factory built and incorporate passive safety feature already question हमें discussion करछु passive safety feature तांकर थाए active न थाए small थांती modular passive so both are correct both are correct and R is the correct explanation of A. Next come your perovskite tandem cell thin film solar cell concentrated solar power कोडा कहारो का सहित related solar technology related एटा आंसर कौन होबो आंसर होबो सी ए जो हमरो perovskite tandem cell they are efficiently boosted beyond 33% by capturing wide spectrum of light हैला thin film solar cell गुडा का कौन करंती ना they are flexible lightweight integrated in buildings or vehicles concentrated solar power uses mirror lenses to concentrate sunlight for large scale power हैला एटा कोन बुझे तीनटा आ सहित ही रिलेटेड आ बुझे पे टाइम भी नहीं मो पास अच्छा consider the following about nuclear safety in India Atomic Energy Regulatory Board is India's primary nuclear safety ठीक अछि सुनीता रिकॉर्डिंग देखि दबो ऑलरेडी सॉरी जीवो एबे हैला हां एरा को कोन होबो ठीक आंसर आरो Atomic Energy Regulatory Board हैला India's primary nuclear safety regulator it is correct next हैला Indian nuclear plants are designed to withstand natural disaster including floods and tsunamis that is also correct माने obviously हम एते खर्च करके न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाउछु तो ताको सेति की स्ट्रांग हमें करबा कि सब डिजास्टर को से माने हैंडल करि परिबे नेक्स्ट हैला radiation emissions from Indian nuclear plants are consistently higher than global benchmark एटा हमें के करि भी परिबानी ग्लोबल बेंचमार्क जति की थिबो हमको से हमर डॉक्ट्राइन पॉलिसी कोन कहूची से अंडर रे हमको काम करिया को पड़िबो हला जदि हमें ताठो अधिका ग्लोबल बेंचमार्क तो अधिका जदि हमें हमर एमिशन शो करिबा देन हमर न्यूक्लियर पावर प्लांट सब बंद हे जिवो so this is wrong so 1 and 2 only is the correct answer next energy storage technology आ तंकर characteristic कोन कोन gravity storage कोन super capacitor कोन lithium ion battery कोन आ pumped storage hydro रो feature कोन तो कोडा हेथिबो तुम भाबुचो pumped hydro storage hydro से mature large scale geographically limit तार फीचर हला कि geographically से माने large scale जिंस गुडा को से गुडा को geographically limited है कि थांती तापरे lithium ion battery कोन करिवो they are very long cycle life नहीं हला they have limited lifespan risk of fire थाए high energy density थाए risk of fire obviously जो बैटरी गाड़ी गुडा कर निया लागुची कोन पे risk of fire तम नबा पे तमे
डरुच बैटरी गाड़ी कर ईवी जो व्हीकल्स गुड़ा करे कौन पे बिकॉज से लिथियम बैटरी थाए एंड से रिस्क ऑफ फायर थाए तो B2 हो गला हैला B2 जदि हो गला ए दीटा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गला ए दीटा भितर कोटा गोटे हबो A4 B2 A4 आउ किछ ऑप्शन A4 टा निहाती हबो बाकी रहला C और D हैला तो एटा तो कटि गला एटा कटि गला तो C और D रहला ग्रेविटी स्टोरेज रे लॉन्ग साइकिल लाइफ रहबो रैपिड डिस्चार्ज रहबो ना सुपर कैपेसिटर रे रहबो कोथरे रहबो सुपर कैपेसिटर रो सुपर कैपेसिटर रो लॉन्ग साइकिल लाइफ रुहे रैपिड चार्ज डिस्चार्ज हुए बट जदि आमे ग्रेविटी स्टोरेज देखिबा रैपिडली सेटा किछि भी काम करेनी ग्रेविटी ऊपर डिपेंड करे हैला तो इट यूजेस surplus energy to lift blocks and those are eco friendly तो आंसर will be option B हैला एबे हमें पढिलु perovskite tandem cells solar cell layered over the silicon cells are called tandem cells हैला so which is right design enables capturing of a broader spectrum of sunlight thereby improving efficiency beyond silicon's limit so that is also right next digital public infrastructure related कौन ठीक हैला DPI so which we discuss payment inclusiveness ये सब तो DPI सहित हमें कौन कहि परिबा आधार serves as the identity layer which is correct enabling digital service delivery UPI forms the payment layer which is also correct DigiLocker belong to the identity layer enabling biometric authentication now is this correct हैला एटा तो भूल DigiLocker हमें डाटा स्टोर करू सितरा आइडेंटिटी लेयर किछि न था आइडेंटिटी पय हमें आधार कार्ड ही यूज करछु हला तो ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली इज करेक्ट इन स्पेस विषय रे भी हमें कथा हेले बेसिकली इंडिया रो प्राइवेट स्पेस सेक्टर को माने स्ट्रेंथ दबा पे हमरो इन स्पेस हेतला अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस सो दिस इज करेक्ट इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट एंटिटीज to use ISRO's facility while ISRO focuses on advanced R&D हैला so this is also ISRO जतो बले तार अलगा इंपोर्टेंट मिशन ऊपर डिपेंडेंट थिबो इन स्पेस तार प्राइवेट पार्ट्स बनेबारे से तार बिजी थिबो हैला तो इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुए ISRO रो फैसिलिटी से माने यूज करि परिबे बिकॉज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड जेतबले माने छोट छोट मिशन रे काम करिवे प्राइवेट स्पेस एजेंसी गुडा को ISRO तार मेजर प्रोजेक्ट रिगार्डिंग काम करूथबो हैला तो बोथ A and R and correct and R is the correct explanation अच्छा PM गति शक्ति रो कोटा पिलर नुह PM गति शक्ति कोन पे करा हिची कनेक्टिविटी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बनेया पे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हैला सेति पे हमरो PM गति शक्ति मिशन टा चली छी तो ए चारटा भीतर कोटा तार पिलर नाही कोटा तार पिलर नाही डिसेंट्रलाइजेशन तार पिलर नाही प्रायोरिटाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन एगुडा का तार पिलर ता छडा सिंक्रोनाइजेशन अछि आ एनालिटिकल और डायनामिक हला अंक छडा एनालिटिकल और डायनामिक ए सब हला पिलर्स ऑफ PM गति शक्ति मास्टर प्लान डिसेंट्रलाइजेशन नुह हला so which is not पचारची which is not the pillar C is not the pillar next ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमर कोन पे थिला अच्छा गति शक्ति तो हमें रिलेट कर परबे एबे हमें पढिलो कनेक्टिविटी रिलेटेड हला इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो GIS बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करे गति शक्ति तो B will be 1 now if B is 1 आ कोन ऑप्शन अछि कि B1 रो आ किछि ऑप्शन ही नाही B1 रो हला जदि तमे गति शक्ति भी जानिचो करि परिबो अदरवाइज क्वांटम मिशन हमें जानिचो इट इज डेवलपमेंट ऑफ 51000 क्यूबिट कंप्यूटर्स हला तो एटा तो करेक्ट बाकी रहिला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रो काम कोन ग्रीन हाइड्रोजन रो काम हला to produce and export hub for clean fuel by 2030 तो हमको इंडिया को नेट जीरो करियर अछि by 2070 सेटा कार मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड by 2030 हमको क्लीन फ्यूल कोन करियर अछि प्रोड्यूस करियर अछि आ गोटे एक्सपोर्ट हब बनियर अछि क्लीन फ्यूल रो हला सो आंसर विल बी बी
A2 खाली B1 टा भी जान देले तुम आंसर पाई जाओ एठी. Next, which of the following is the target of the national green hydrogen? Again say same question. तो आम ये पढ़िलु zero hydrogen imports by 2027 है 2027 पर्यंत हमको net zero achieve करियार अछि टारगेट. तो सेति पे सेटा हम also एटा भी ठीक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर एनम है वर्ष को एति ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हम दैट इज रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड. तो यहाँ फर्स्ट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज बी. जदि एटा न था देन हम एटा कहि पारथांत है नेट जीरो टारगेट अछि हमर बाय 2027. बट जेहेतु तार एनुअल प्रोडक्शन रो पर्टिकुलर डाटा देछि तो इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट है ऑप्शन बी आमे नै कि चलिबा. नेशनल क्वांटम मिशन रो कौन कौन रिलेटेड देछि अगेन क्यूबिट बिट ता सहित it aims to establish satellite based secure quantum communication. Satellite based quantum communication establish करिवो की yes करिवो हला. It seeks to develop atomic clocks and magnetometer. Atomic clocks आमे पढिछु कि atomic हमर कोन atomic clocks यूज करा होछि एंड ताकू ही डेवलप करा जिवो मैग्नेटोमीटर डेवलप करा जिवो नेशनल क्वांटम मिशन रे. And it is coordinated through 2 thematic hubs at IIC and IIT Kanpur. Now is this correct? चलो दीटा हब यूज होची IIC Bangalore रे थे and IIT Kanpur. कोडा ठीक IIT कानपुर न थाई कि एडा जदी IIT मद्रास थांता देन ठीक है था हैला. IIT कानपुर इज भूल बाकी दीटा ऑप्शन ठीक बट एटा IIT कानपुर नो. So 1 and 2 only is the right answer. Next, Chandrayaan 3 marked India as the first nation. Yes, Chandrayaan 3 हमरो फर्स्ट माने इंडिया को फर्स्ट नेशन बने देला जे कि हमरो साउथ पोल रे सॉफ्ट लैंडिंग करिबारे सक्षम थिला. And its Vikram, what is the reason? Its Vikram lander performed a hop experiment. Hop experiment हमें करिलु जो थरे कि डेमोन्स्ट्रेट करलु कि सैंपल रिटर्न कैपेबिलिटीज अछि विक्रम रो हला. तो आरो कोन हबो आंसर both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Next, अग्निबाण विषय में पढिथिलु हला. तो सेरा कोन इंडिया रो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च यूजिंग ए 3D प्रिंटेड इंजन. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तापरे चंद्रयान 3 अगेन चंद्रयान 3 होची हमरो फर्स्ट लैंडिंग नियर द साउथ पोल. अग्निबाण होची अग्निबाण कोन हबो अच्छा पार्कर सोलर प्रोब अछि सर. पार्कर सोलर प्रोब होची तमरो नासा रो एटा नासा रो जे कि सन रो कोरोना ऊपर से प्रोबटा अछि किछि डेप्थ रे भी अछि सन रो कोरोना रे तारो स्टडी करिया पे कोरोना रो स्टडी करिया पे. तो C3A2 C3 कोटा आइगला एटा A2 C3 B1. So it is the first Indian test flight with semi cryogenic propulsion है ना. अच्छा अगेन GIS based special planning हमें पढ़िलु कोन हबो PM गति शक्ति GIS स्टडी यूज करी कि जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लानिंग एंड ऑल. नेक्स्ट पार्कर सोलर प्रोब हमें पढ़िलु इसरो रो कोच नासा रो is helping to improve understanding of the space weather. It is also correct. It is orbiting the Lagrange point 1 providing uninterrupted sun observation. Now बे मु तमको कहली पार्कर सोलर प्रोब ता सन रो कोरोना लेयर रे अछि ना कि L1 रे हला. तो एटा भूल हे गला जदी L1 रे ना L1 पे हमरा आदित्य L1 अछि राइट. सो पार्कर सोलर फर्स्ट ता ही ठीक. तो कोन हो A is correct but R is incorrect हला. नेक्स्ट पीएम गति शक्ति रो कोटा बेनिफिट नहीं. पीएम गति शक्ति हमर कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक ए सब रिलेटेड. तो लॉजिस्टिक रो कॉस्ट कमे दबो ठीक अछि एंड क्रिएशन ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एटा भी ठीक अछि माने एटा हमको पचारि छि व्हिच इज नॉट ए बेनिफिट. प्रोजेक्ट डिले को मिनिमाइज कर दबो एटा भी ठीक अछि बट फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट रे तार किछि काम नै हला. तो दिस इज रॉन्ग. Next again DPI related. DPI promotes financial inclusion and DBT in space is allowing private satellite launches is correct.
एकटा मु कहली तुमको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रो कोन टारगेट नेट जीरो बाय 2070 and energy independence by 2047. So which is correct? All are correct. हॉप एक्सपेरिमेंट अगेन हॉप एक्सपेरिमेंट आमर विक्रम लैंडर रही छोड़ देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आउ थे it aims to make India's transport sector completely hydrogen based. Is it correct? It is not. Transport sector green mission is basically कौन जदि एटा गति शक्ति होता ए स्टेटमेंट ठीक होता बट एटा तो नुह है एटा जदि नुह बाकी रहा 1 and 2 तो 1 and 2 only is the correct answer. नेक्स्ट इन स्पेस कौन करिवो प्राइवेट सेक्टर पे काम करे क्वांटम मिशन कौन करे क्वांटम कंप्यूटिंग डीपीआई प्रोवाइड्स डिजिटल रेल कौन है A2B1C3 A2B1C3. Consider the following about InSpace. It acts as the interface between ISRO and private entities. It is correct. It supervises commercial contracts for satellite leasing. It facilitates access for startups to ISRO's testing facility. Hela, eta to ठीक. Second option is right or wrong? सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग है से सुपरवाइज करेनी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को से सुपरवाइज करेनी कि सैटेलाइट लीजिंग रे काम करेनी बेसिकली से कौन करे एक्सेस दिए स्टार्टअप्स को जे कि इसरो रो टेस्टिंग फैसिलिटी टा को यूज करके से सैटेलाइट बनै पारे व्हिच विल बी इवेंचुअली हेल्पफुल फॉर इसरो हैला. सो 1 and 3 इज करेक्ट हैला बट 2 इज नॉट करेक्ट. मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विद द प्राइमरी मैंडेट. अगेन InSpace acts as a commercial arm गोटे अच्छी आउट अच्छी तमरो promotes and authorizes private space sector activities. So InSpace हमरो basically private space sector activities पे अच्छी तांको authority दोची. NSIL कौन करे it acts as a commercial arm हैला it acts as a commercial arm. So obviously जदि एटा ही जाउची आ किछ ऑप्शन ही नहीं B1 रो ही गोटे ऑप्शन अछि A2 B1 इसरो आमे जानिछु गगनयान मिशन रे इसरो काम करूछि. NSIL has successfully contracted Hindustan Aeronautics Limited and L&T for PSLV production. Is it correct? Yes, it is correct. जेहेतु से कमर्शियलाइजेशन NSIL काम करे इति हमें जस्ट देखिलु कमर्शियल आर्म होछि NSIL प्राइवेट आर्म होछि InSpace हैला. तो कमर्शियल सेक्टर जदि अछि हॉल ऑफ L&T सहित कॉन्ट्रैक्ट अछि PSLV प्रोडक्शन पे हॉल हमर बनाए भी PSLV जानथिबो. रीजन हैला द एम इज टू शिफ्ट कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल टू प्राइवेट इंडस्ट्री. निसार मिशन में पढ़थिलु निसार रो करेक्ट स्टेटमेंट कोन व्योम मित्र तो हबनी एटा हमर गगनयान सहित. It is a joint earth observation mission by NASA and ISRO. This is correct हैला. एटा हम जानछु निसार रो फुल फॉर्म ही सेटा N for NASA I for ISRO synthetic aperture radar हैला. तो B is correct. DRDO 2.0 reforms focus on transferring conventional weapons development to private industry, concentrating on futuristic technology like DWAI and quantum system, shifting completely to nuclear energy research. So which will be correct? Some से काइंड शिफ्ट हबो completely to nuclear energy research हैला सेमति किछि नै ए दीटा स्टेटमेंट हमर एठी ठीक अछि. क्लियर. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग WHO रो अलर्ट आउ आउट तमरो आउटब्रेक आउ तारो कंट्री. तो पोलियोमाइलिटिस आउटब्रेक कोठी देखा जायतिला चिकनगुनिया आउटब्रेक कोठी देखा जायतिला और CVD PV2 ओरिजिन कोठी देखा जायतिला कोडा करेक्ट हबो. हेलो पोलियोमाइलिटिस हमरो पापिया न्यू गिनी रे मोस्टली तारो आउटब्रेक हेतिला. चिकनगुनिया तमरो चाइना रे देखा जायतिला और एटा तमरो इंडोनेशिया रे देखा जायतिला. FDA approved 2024-25 mRNA vaccine formula is designed as एटा आंसर कोन हबो
monovalent vaccine targeting Omicron KP2 strain ना protein subunit vaccine covering multiple flu strains mRNA अच्छी माने एटा तो हबनी लाइव एटेन्यूएटेड हबनी हला एटा तो शेयर हे गलो बाकी एबीसी भितरे कोन हबो इट इज ए मोनोवैलेंट वैक्सीन टार्गेटिंग ओमिक्रॉन केपी2 स्ट्रेन हला हम पढी थिलु कि लाइव एटेन्यूएटेड कोन एटेन्यूएटेड माने वीक राइट तो कोरोना वायरस पे हमें कोन एटा यूज करथिलु ना कोन कोरोना वायरस पे जो वैक्सीन गुडा को यूज होतला दोज आर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन तो एटा तो ठीक नहीं हला प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन भी हबनी प्रोटीन सब यूनिट हेतले सेटा हेथांदा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हला एमआरएनए वैक्सीन सेटी न थांता तो रिकॉम्बिनेंट जदी एटी थांता देन ए ट्रीटमेंट ठीक हे थांता तो एटा तो दीटा भूल हे गेला एंड बाइवैलेंट वैक्सीन नुह जोथरे के अल्फा और डेल्टा स्ट्रेन न थाए ओनली ओमिक्रॉन केपी2 स्ट्रेन थाए